माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, supplementary demands for grants 2023-2024 श्री पंकज चौधरी। सहयोगी सीतारमण की ओर से अनुपूरक अनुदान मांगों 2023-24 को दर्शाने वाला एक विवरण अंग्रेजी तथा हिंदी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Short duration discussion. Further discussion on the economic situation in the country raised by Shri Derek O'Brien on 5th December 2023. On 5th December 2023, Shri Rakesh Sinha had concluded his address while participating in the discussion. Any other member desiring to speak that was indicated. सर कैबिनेट मंत्री हैं नहीं सर? The telepathy of Jairam Ramesh is so strong, overtaking physical hurdles. The Honorable Minister, who is deeply committed to parliamentary practices and has been in this House as much as you have been, or perhaps more, is very much here. I had, honorable members, indicated that we would like to accommodate as many members as possible. Some names have come. We would try to accommodate the honorable members. Shri K.R.N. Rajesh Kumar. No, I'm... Speakers. Professor Ram Gopal Yadav. We will have benefit of his thoughts on a very important subject, very wholesomely initiated by Derek O'Brien, impactfully initiated. Sir. Let me tell you, our equation always has been the same. But right now what has happened is, you seem to have acquired a new intellectual ability to find it out. Professor, 20 सेकंड को एडजस्ट करवा दें सर, वो 20-22 सेकंड पहले ही हो गया. Sir, I am here to take care of everything. Okay sir. श्रीमान, I will drive the technology rather than be driven by it. आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कल से सुन रहा हूँ भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा, और बहुत सारे आंकड़े भी सुन रहा हूँ. वैसे आंकड़े आमतौर पर ये भूल भुलैया होते हैं, पता नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किसी को इधर के लोग कंट्राडिक्ट करते हैं तो और कहाँ बनाता है? मैं मॉडरेट. इस ग्लोब के कौन से हिस्से में बनता है? देखिए, मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं बोलता, आप जानते हैं. कल जब अदरवाइज मान लें आप, कल जब इधर से लोग बोल रहे थे
तो मुझे ऐसा लगता था ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग जिनको यहाँ की कोई जानकारी धरातल की नहीं। सच बात यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये सब आ जाते हैं। ये गाँव में देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि नहीं। जैसे मोदी जी से प्रचार करा दिया, हर घर जल हर घर नल, नहीं, हर घर नल, हर घर नल, और हर फिर घर जल। जल। तो सॉरी, थैंक यू सर। तो हम जब जाते हैं अपने इलाके में तो लोग तो मिलने आते हैं कि समस्याएं होती हैं, कोई मदद के लिए आता है, क्या आता है। तो मैं अक्सर पूछता हूं कि बताइए आपके गांव में हर घर में पानी पहुंच गया? मैं कई गांव में जाता भी ब्याह शादियों, सारी पक्की गलियां जो विधायकों ने, सांसदों ने या ब्लॉक ने या जिला पंचायतों ने बनवा दी, वो खुद ही पड़ी हैं कि पाइपलाइन जानी। पाइपलाइन नहीं बनी, टंकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? जो बताते हैं लोग उसको अदरवाइज न लें कोई गुजरात वाले लोग। वहाँ के लोग कहते हैं कि सारे ठेकेदार गुजरात के थे और पैसा लेके चले गए। ये लोग कह रहे हैं। सुनिए, अब रिकॉर्ड में देख लीजिएगा है कि नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वही आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। तो अब कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100% घरों में पानी गया, किसी में एक भी गांव घर में नहीं गया। तो इसको देखने की ज़रूरत है, इन लोगों की कहने की ज़रूरत है कि करिए। जब या तो प्रधानमंत्री जी से प्रचार मत कराइए इतने बड़े आदमी से, या फिर उस काम को पूरा कराइए। चिदम्बरम जी ने कल कहा था कि ज़मीन पर नहीं दिखता है, बड़ी हमारी इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो मोदी जी ने कहा, सुशील मोदी जी ने कहा कि 3 राज्यों में जनता अगर नीचे नहीं दिखता तो जनता ने कैसे जिता दिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तीसरे कुछ राज्य में, कर्नाटक में आप क्यों हारे, ये कोई तर्क नहीं, ये कोई बैरोमीटर नहीं हो सकता है। अब आंकड़े की अगर बात करें तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, सही, बहुत बल्क का है सब मामला, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी 194 देश में हम 133वें नंबर पे। जो आम आदमी, सारा व्यक्ति क्या है, उसकी क्या स्थिति है, वो दर्शाता है कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। भले ही 5वें नंबर पे हैं, लेकिन 194 में 133वें नंबर पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहती है? 283 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर 125 देशों में हमारी स्थिति 111 में। हालांकि एफएसएसआई ने इसका कंट्राडिक्शन किया है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि कौन बनाते हैं आंकड़े, कैसे बनाते हैं, लेकिन इसलिए इन आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। अगर है तो मैं ये भी आंकड़ा दे रहा हूँ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए केवल आंकड़ों पर भरोसा मत कीजिए। राकेश सिन्हा साहब नहीं हैं यहाँ, उन्होंने कई उदाहरण दिए। मैं तो रोज़ जब वहाँ रहता हूँ अपने क्षेत्र में तो सैकड़ों लोग मिलते हैं, तमाम लोग आते हैं ऐसे कि साहब मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद करवा दीजिए। अभी परसों एक ऐसी स्थिति हुई जब मैं वहाँ था, अभी 2-3 दिन यहाँ नहीं था, एक आदमी बैठा था, मुझे बताओ तुम्हारा क्या काम है? तो साहब मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। सब लोगों से मैंने कहा अगर सबकी बात हो गई तो जाए, नहीं तो हम इनको लेके हो गई, सब चाय पी के जा रहे। तो उसने कहा साहब मेरी बेटी की शादी है, उसकी सहेलियां थोड़ा संपन्न परिवार की हैं जिनकी शादी हुई, तो उसने अपनी, मुझसे तो नहीं कहा लेकिन अपनी माँ से कहा कि जैसा ये और हमारी सहेलियों के लिए शादी के दिन के लिए लहंगा बनाया जाता है, वो हमारी अब हैसियत नहीं, क्योंकि लहंगा तो अब लोग टीवी के जरिए ऐसा दिखने लगा कि 1-1 करोड़ रुपए का बनता है, 50 लाख का भी पहनती हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, लड़कियों का मन तो होता ही सबका, गरीब हो कुछ भी हो, लेकिन शादी के दिन बेहतर पहनना चाहती हैं, तो 1 करोड़ का नहीं तो 10,000 15,000 का ही लहंगा बनवा। एक मेरी पत्नी से उनकी बेटी ने कहा था, तो हम उनकी इसकी व्यवस्था हम करवा देंगे, आप इसमें निराश मत होइए। लेकिन स्थिति ये ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया। उज्ज्वला दी कि जिसको
गैस का सिलेंडर देते हैं, ये तो पता कीजिए कि वो गैस सिलेंडर दिए उसमें भरे कितने गए। पैसा ही नहीं लोगों को भरवाने के लिए, 80% लोगों को पैसा नहीं भरवाने के लिए, पड़ोसी लोगों ने ले लिया कि हमें दे दो सिलेंडर। ये स्थिति है। आप सर, मैं तो ये चाहता हूं कि लोग गांव में जाके देखें कि जो शौचालय बने हुए हैं उनका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं में बकरियां बनी हैं, कहीं में भूसा भर दिया लोगों ने, पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये स्थिति है। तो ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं दर्शाता है। यहाँ तो कम से कम ऐसी बात कहिए जो वहाँ सुनने वाला ये समझे कि हाँ ये सही बात कही जा रही है। सुनने वाला कहेगा उनका ऊपर से निकल जाएगा, सर से ऊपर से कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, ये सही है, 5 लाख रुपए की सबकी व्यवस्था की, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं मान रहे। आप आश्चर्य करेंगे कि एक मरीज को इलाहाबाद की एमपी हैं, बहुगुणा जी की बेटी हैं रीता जी, उन्होंने भेजा वो गंगाराम, तो उसने वापस कर दिया कि हम ये कार्ड नहीं मानते। उन्होंने चिट्ठी लिखी और हमसे व्यक्तिगत आके कहा कि आप हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, कुछ मदद कीजिए। ये लाखों रुपए का बिल बना दिया और इसको मान ही नहीं रहा है। मैंने गंगाराम के सुपरिटेंडेंट से बात की, मैं जानता हूँ वो एम्स की गवर्निंग बॉडी में मेरे साथ थे, कभी की मुलाकात हो जाती। उन्होंने कहा साहब इसका कोई ठिकाना नहीं कार्ड। अब देखिए, ऑथेंटिक गवर्नमेंट का कार्ड है, लेकिन इसलिए कि उस पर आप जब पेमेंट लेंगे ज़्यादा तो मालूम पड़ जाएगा कि जो 10 रुपए की चीज़ है उसका 1000 रुपया ले रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं कोई। और कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं कि 500 रुपए की दवा दी और 5000 का बिल बना देते, पैसा मिल जाएगा, हम लूट हो जाती उसमें। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ दुनिया में सर्वाधिक हो रहा है। हमारे हेल्थ विभाग की और दुनिया के दूसरे देशों की ये रिपोर्ट है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से 2-3% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अगर एक घर में किसी को कैंसर का मरीज हो गया तो उसकी तो ज़मीन बिक गई। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैसे कम हो, मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, इसको अगर कम कर देंगे, आदमी का कोशिश की है आपकी गवर्नमेंट ने, नो डाउट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। तो कुछ दूसरे देश जैसे लंदन वगैरह में है 2-3% है केवल, पश्चिमी देशों में बहुत कम है। तो यहाँ की अगर व्यवस्था नहीं होती है तो कोई लाभ होने वाला नहीं। आप कहते रहिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों पर मत जाएं, गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाके में जाकर असलियत को देखें, लोगों से बात करें और कमियों को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। Sir, Honorable Chairman, sir, I am very thankful to you for giving this opportunity. Sir, as on 31st March 23, the debt of the central government was about 155.6 lakh crore. This is 57.1% of GDP in financial year 22-23. When compared with the unemployment rate as on July 23 is 7.95%. During the first quarter of the current financial year, the manufacturing sector was not performing well to the expected level. But it seems the second quarter of the spur of growth in the manufacturing sector is there. Under these situations, a big question which arises in everybody's mind is whether the government will be able to become a 5 trillion economy by 2025. Or that has to be looked into. In the employment sector, there is a big gap. The government had set the ambitious task of providing 1 million jobs by the end of 2023. We are in the month of December. Only a few days left at the end of 20 year. My question is, it has to be considered by the Honorable Minister. Sir, we have given
to ourselves, the Cooperative Federalism Center, has the responsibility to take care of the financial conditions of the states. There are certain parameters which every state has to be followed. But what is happening in the state of Andhra Pradesh is known to everybody. As on the date of the debt of the present the state is about 11,28,992 crores. As per the information given in an answer to in a parliament question, the debt of the state government at the end of the financial year 22-23 is estimated about 28% of GDP. Is the debt percentage of the state government falls within 28% of GDP. Sir, as per the statement of RBI, Please. sir, every day, what is this every day? Please don't it is talk, a state is a part of the country. Everybody is there objecting every day. Speak on the Indian economy. It is a finance, state finance, it is a part of, Andhra Pradesh is a part of India. Please. It is not outside. But, sir, as per this, it is a record, as per the record of the RBI. Please. As per the statement of RBI, Please. the state government of Andhra Pradesh raised 46,443 crores from market. It repaid only 10,339. It has not even paid off of the amount borrowed market. In reply to my parliament question, on August 23, it has been interally guarantees of 22,363 crores financially 21-23, position of Indian economy. 57,449 during every financial year 22-23 have been issued by the state government. The state government of Andhra Pradesh and the state government has pressed into service of the state public sector companies, special purpose vehicles and other equivalent instruments into borrowing, and thereby attempted to decide the government and the net borrowings are within the prescribed limit. But the central government has stated that the borrowings by the state public sector companies and other equivalent instruments where the principal and interest are to be serviced out of the budgets. In spite of this advisory issued by the central government, did not stop the borrowing. Mani Ravindra Kumar ji, please conclude. Your time is already over. Sir, just 3 minutes, please. The Honorable Chairman has given 10 minutes time to my colleague member. Yes, it has been given. 3 minutes. Has given 10 minutes time for my colleague member. No, sir. Then the state is becoming a debt-ridden state. The debts of the government are increasing day by day. I'm inviting other person now, please. Your time is already over. Sir, as per the COG itself has observed, the government is making heinous mistakes of financial management. The COG itself about the financial ending, 22nd March has borrowed 1,20,000 crores without telling the assembly. Please conclude the COG now. itself, audit certificate in the name of qualified opinion was given only to the AP in the history of the country. She said she can debts in the corporation as per the given to, but not is giving full information about the debts of the corporation. COG says every rupee spent on 21-22, there is a debt inviting of other person 51 now. It will not go on record now anymore. No, please. Mani Sri Mahesh Jetmalani, please. Mani Mahesh Jetmalani, please speak on the subject, please. Your time is 15 minutes. Your time is 15 minutes. Please speak. Please speak. It's not going on record. Please follow the rules. Please. Please speak. You speak, it's not going on record. It's not going on record, you speak. Please. Honorable Chairman, I thank you for this opportunity to speak on this most important subject of the economic health of this country. Sir, the essence of the criticism from the opposition benches, led in the main by former Finance Minister Mr. Chidambaram and Honorable Member Mr. Derek O'Brien, is that there is no point in the present government tom-tomming about India's high growth rate. When on the ground, this high growth rate has not translated into indicators vital for the poor, such as high employment and low inflation. Sir, Mr. Chidambaram, as usual,
has shifted the goalpost. But this shift is heartening in one respect. In April this year, citing the World Bank's latest GDP estimate for India, he attacked the government and he said that it was only Mr. Modi who was boasting about the economic growth rate in the country. The World Bank development update, which he relied on, had cut India's growth forecast to 6.3% from the earlier 6.6%. Mr. Chidambaram, however, has been repeatedly wrong about his economic forecasts regarding the NDA government's policies and programs. Again, the World Bank estimates have proved to be hopelessly wrong, and in the last 2 quarters, India's growth rate has been very impressive and way above the world average growth rate at 7.6% and 7.8%. Now, sir, Mr. Chidambaram, in a clear case of what can only be called convenient amnesia, he now accepts the growth rate. He doesn't dispute these figures, though he earlier did, and criticized us for boasting about it and predicting this high growth rate. So now he has moved on from his blind reliance on foreign forecasts about India's growth, but he laments now that what use high growth rates if high unemployment and high inflation persist. Now, sir, on employment, Mr. Chidambaram relies upon the periodic labor force survey. So it's a very good survey. It has got good methodology and its data is unexceptionable. So let us go by the PLFS data. First, sir, the data reflects, and sir, I'm afraid I'll have to read this out because there are figures involved. Normally, I don't like reading it out. Normally, I like to address it ad hoc, extempore. But sir, I'll read it out. First, the data reflects that both in quantity and quality, the employment situation improved consistently before the COVID pandemic. From 2017-18 to 2019-20, regular wage / salaried employees increased by 1.5 crores, a growth of 13.2%. The increase among females was 0.72 crores, or 29.4%, and that for males, 0.79 crores, or 8.8%. Further, formal employment increased by 1.2 crores, or 25.3%. The quantity of employment improved pre-pandemic as well. From 2017-18 to 2019-20, the UR, that is the unemployment rate, which captures long-term unemployment, decreased from 6% to 4.8%. The labor force participation rate, LFPR, increased from 49.8% to 53.5%. And so the worker population ratio increased from 46.8% to 50.9%. These changes were widely dispersed in rural and urban areas and for males and females. Now, sir, this is the pre-COVID. So as everybody knows, there was a setback to the economy during COVID. But let us come to the post-COVID situation. Post-COVID, urban employment registered a robust V-shaped recovery after the adverse impacts during lockdown and the second wave of the pandemic. Compared to the October-December 2019 quarter, in the April-June 2023 quarter, so worker population ratio increased from 44.1% to 45.5%. And sir, the labor force participation ratio from 47.8% to 48.8%.
And, sir, unemployment rate declined from 7.8 to 6.6%. So as urban areas were most affected by the pandemic, the complete recovery in employment in urban areas is crucial. The unemployment rate recorded in April-June 2023 quarter is the lowest, sir. This is important. The unemployment rate recorded in April-June 2023 quarter is the lowest over the last 5 years. Sir, the annual PLFS, which Mr. Chidambaram relies upon, the survey data, which covers both rural and urban areas, also shows complete recovery in employment post-pandemic. This pattern of complete recovery in employment is reflected similarly in data from, sir, EPFO, which is the Employees Provident Fund Organization, and Manrega. The monthly EFPO data discloses, and this is again a very important statistic, that the net additions in August 23 as being 116% higher than in December 2019. Honorable Chairman, you know that this EPFO data, the additions to it is employees' contributions. 116% additions to the EPFO reflect the quantum of employees that have arisen, the quantum of employment, therefore, that has risen. The demand for work, sir, this is also very important, under Manrega in December 2022 is half the demand in 2023. So Manrega is when people are desperate for work. They have no other work. It is now half the demand. This shows that the demand for distress work has declined sharply in rural areas. So finally, sir, as per PLFS, again the same survey which Mr. Chidambaram relies upon, the unemployment rate for persons, this is an overall picture, the unemployment rate for persons aged 15 and above at the all India level decreased to 3.2% only, sir, in 22-23 from 4.1% in 21-22. So that's the state of the unemployment which Mr. Chidambaram harps on. So then as regards inflation, as per data released by the National Statistic Office, the NSO, the Consumer Price Index was 4.25% in May this year, 4.81% in June this year, and 5.02% in September, well before Reserve Bank, well below Reserve Bank India's upper tolerance limit of 6%. So we have been below 6% continuously, sir. And so ultimately the ultimate test, sir, forget figures and statistics. Employment, sir, and inflation are matters of great concern to the poor. Overwhelmingly, the only test about whether unemployment and inflation is hurting people are the election results. Sir, the overwhelming results show, sir, that people are satisfied with employment and inflation levels. Sir, a former British Prime Minister is alleged to have said that there were 3 kinds of lies. Lies, damn lies, and statistics. So Mr. Chidambaram is an excellent juggler of facts. I leave it to members of the House and others watching this debate to decide which category do Mr. Chidambaram's statements fall within. So perhaps it merits emphasis that as Finance Minister, Mr. Chidambaram presided over some of the greatest scams this country has seen, which devastated our banking sector, ruined investors, and severely retarded economic growth, and the very important indicators of employment and inflation, which he has so eloquently waxed about in this House. So the only silver lining, I may add, personally, is that his activities and those of his government have in their aftermath
enriched a battalion of lawyers whose earnings, sir, I cannot grudge. Sir, now, sir, honorable member Mr. O'Brien, being a leader from a regional party, the TMC, has struck a parochial note, sir. He talks about, sir, 8.5% growth rate in West Bengal, which is true. Can't deny that. So being a member of a national party, I have all India concerns. But I do admit to having a soft corner for West Bengal, having studied in a boarding school there from the age of 10 to 16, in that picturesque hill station, Darjeeling. So the burden of Mr. O'Brien's song is that India's high growth rate has only enriched billionaires and widened the inequality gap. Sir, I acknowledge, as I said, that West Bengal has a high growth rate of 8.4%, which is above the national average. But perhaps an examination of statewide data should reveal to Mr. O'Brien where the fruits of economic growth in West Bengal have gone. Sir, if per capita income is a measure of economic welfare, then West Bengal per capita income is well below the national average, and in fact, apart from a few northeastern states, one of the lowest in the country. Then, sir, again, on the question of income inequality, which he talks so much about, so as per the Gini coefficient, so the Gini coefficient is now a measure used by economists to measure income inequality, income distribution. So as a measure of inequality, West Bengal has a coefficient of 0.38, which is the third largest in the country and more than the national average. So if you go by income inequality, income distribution, his state performs the third worst in the country. So perhaps he needs to ask, as a former quiz master, some questions of himself, and he may discover some home truths. Sir, in conclusion, it is the right of the opposition not merely to ask questions, but to ask incisive, searching questions of the Treasury benches. But, sir, equally, it behoves the opposition not to buttress their case with selective facts, slanted questions, and distorted data. So the people of this country deserve to know from their elected representatives the unvarnished truth. I thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, Honorable Sri Binay Vishwamji, 3 minutes, sir. 3 minutes. 3 minutes. Sir, give me 10 minutes, sir, please. 3 minutes. I don't have in my hand. Sir. It's in the list here. Sir, Please. my friends from the BJP, they are trying very hard, including my previous speaker, Jadalari. They were trying to pose a picture which is most untrue. Most untrue. The V-shaped development, where is it? Where is it? It can't be seen in the country. The fact of the country is that the people are hungry. The young are unemployed. The young people, they knock at all the doors for employment. And we ask you, what happened to the promise of yours? 2 crores employment per year. Where is it now? Do you know the fact that even the FAO have made a report? It says that 22.4 crores of Indians are hungry today. And you say that everything is fine here. Sir, you live on propaganda. The BJP thrive on propaganda. And you thrive on propaganda in a very nasty way. The Beti Bachao, Beti Patao scheme. What happened to it? Major share of it, 42.3% of that funds went for propaganda alone. So this is the right-wing way of development. You forget the poor, forget the people, and you live on propaganda and spend the money for propaganda.
This is the real truth of the country today. The economy is in shambles. Unemployment is on the increase. Hunger is on the increase. And the people have no huts to live. Your projects are great, but they are not bringing any fruits for the people. Sir, we want a decent life. At this age of ours, when the country is 77 years of independence, in this country, the maximum number of people of the whole world are illiterate, even today. Illiterate. Today night, the maximum number of people will go for sleep with half stomach. So this is the country in which child below the age of 5 years are dying, the maximum number. This is the country, sir, where the pregnant women are anemic, the maximum. These are WHO statements, sir. And you shut your eyes to this fact. And you tell the whole world that Vishwaguru. No, that Vishwaguru story is a real story, not. It's a story of illusions, a story of lies and half-truths. And you tell the world that the whole world is looking at you. Sir, the time has come that the people are demanding a change in the country. Don't think too much about the victory. That victory is a temporary victory. I can tell you, when all the forces of this country who stands for secularism, democracy, if they will stand together and hold hands together, we are sure that you can be defeated. The struggle has begun. Don't think that the struggle has ended. It's only a temporary situation. The struggle continues. And this House said that the struggle, the people will win. The people will win, not the propaganda masters. Sir, Pope Francis has told about one fight. What's the point? He told that if all the... 1 minute. Sir, one sentence. One minute on Pope Francis. Yes. Sir, Pope Francis told, if all the endeavors of the human beings are centered only for profits, then the Thank you. whole ecosystem, Thank the you. whole ethics, Conclude. religion, all will be in shambles. So people are important, sir, not the profits. This is the question. We ask the question to you. Who are important? The people or the profits? We say the people are important, not your profits. You plead for Adani's. Please conclude. Ambani's. Your government is the Adani, Ambani government, and on their figures, you paint a rosy picture saying that this country is growing. This country is growing only for the 7% of the population. Thank you. They are growing, not the people. Your figures are their figures, not the people's figures. You stand for the people, not for your I'm people. asking Thank you, sir. Thank you. Srimati Mahua Majhi, 3 minutes. Srimati Mahua Majhi, please. Thank you. 3 minutes. Honorable Deputy Chairman, sir. इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री विषय पर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है या मेरुदंड की तरह होता है। यदि वह सीधा ना हो तो देश चरमरा जाता है। हम 21वीं सदी में है, विश्वगुरु बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के पूरे होने के बाद ही हम कला, संस्कृति, साहित्य आदि के विकास की बात सोच सकते हैं। अब कला, साहित्य, संस्कृति क्यों? क्योंकि कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है, देश को सम्मानित स्थान देता है, विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भूखा पेट व्यक्ति देश के विकास में क्या साथ देगा और देश को विश्वगुरु बनाने की ख्वाहिश को कैसे पूरा करेगा? उन्हें सम्मानजनक रोजगार चाहिए, आर्थिक निश्चिंतता चाहिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा वर्तमान केंद्र सरकार पूरा कर पाई क्या? यदि पाती तो अब तक तो 2014 से 2023 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, आर्थिक निश्चिंतता आती और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में लग जाते। अग्निवीर फौज में लगभग 3 साल की नौकरी,
आप सोच सकते हैं, पहले एक गरीब का बेटा जब फौज में जाता था तो पूरा परिवार निश्चिंत हो जाता था, लेकिन अब 3 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, तो वो क्या करेगा? वो तो बेरोजगार हो जाएगा। क्या वो आत्महत्या के बारे में सोचेगा? या फिर वो जो वादा है केंद्र सरकार का कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, उस दावे के अनुसार वो अपने परिवार का पेट पालेगा लेकर सरकार से, और अपने उससे उसके आत्मसम्मान का क्या होगा? क्या वो आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा? केंद्र सरकार कहती है जीडीपी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इससे कुछ बड़े उद्योगपतियों सहित कुछ ही प्रतिशत लोगों को मुनाफा हो रहा, देश के ज़्यादातर गरीब जनता को नहीं। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है। सरकार के दावे के अनुरूप यदि लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है जिनके पास खाने को पैसे नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं कि अपने परिवार का पेट पाल सके, अपनी आय से चावल, आटा, अनाज खरीद सके। 80 करोड़ यानी देश के लगभग 3/4 लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में भी व्यापक असमानता दिखती है। खर्च की प्रायोरिटी आश्चर्यचकित करती है। एक तरफ मनरेगा जैसी गरीबों की योजना के पैसे स्टेट्स को समय पर देने में आनाकानी हो रही है, वहीं केंद्र सरकार के विज्ञापनों एवं पब्लिसिटी का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में भी पब्लिसिटी। झारखंड सरकार में भी मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद में भुगतान हेतु लगभग 426 करोड़ रुपए लंबित हैं, जबकि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है, देश के अन्य राज्यों से नीचे दूसरे नंबर पर है। पठारी इलाका है, बारिश के अलावा खेतीबाड़ी नहीं होती, ट्रैफिकिंग की समस्या है, पलायन विस्थापन की समस्या है, और इसी के कारण बहुत ज़रूरी है कि मनरेगा के पैसे दिए जाएं समय पर। भारत सरकार की कोल कंपनियों द्वारा झारखंड में कोयले की रॉयल्टी के लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद अभी तक नहीं दिया गया, जबकि कोयले का देश में जो खपत है उसका मैक्सिमम हिस्सा झारखंड से आता है। ये आर्थिक सौतेलापन क्यों? पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए, नहीं तो बुढ़ापे की लाठी भी छीन जा रही है लोगों की। हमारे स्टेट में हमारी सरकार ने कर दिया है, ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए। राज्यों को जीएसटी संग्रह की हिस्सेदारी की देय राशि समय पर नहीं मिलती। झारखंड जैसा गरीब राज्य भी इस वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे राज्य में 8 लाख गरीबों को नहीं मिला, ये भी नहीं दिया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ आर्थिक मामलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महुआ माझी जी। नाउ डॉक्टर फौजिया खान जी। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you very much. 3 minutes. Thank you, sir. Sir, there has been a lot of discussion on numbers and economic indicators, sir. Since yesterday, that measure the economic situation of our country. Perhaps it is time, sir, for a recalibration of our metrics to ensure that the pursuit of progress is accurately reflected. Economic growth isn't just about numbers. There's a deeper narrative to explore. These numbers have to reflect on ground. Sir, it is essential to move beyond surface level reporting. The most concerning issue this year is the escalating unemployment crisis in India, particularly the dearth of government job opportunities. सर, मैं एक कवि की एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँगी जो बेरोजगारी पर है। बेरोजगार देवी प्रसाद मिश्र। ये सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। वो डकैती नहीं डालता, वो तस्करी नहीं करता, वो हत्याएं नहीं करता, वह फरेबी वादे नहीं करता, वह देश नहीं चलाता, फिर भी ये सवाल उसे शर्मिंदा करता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। सभापति महोदय, unemployment is intertwined with alarming consequences, notably with the rise in youth suicides. According to a report from Azim Premji University, 42% young graduates were unemployed. Sir, according to CMIE data, jobs in manufacturing dropped 31% between 2016 and 2023. According to the latest report by the NCRB, over 13,000 students took their own lives in India in 2022.
9.6 of the suicides were those who were self-employed or salaried professionals. Unemployed persons comprise 9.2% of all suicides reported in India. Graduates account for 5.2% of all suicide deaths. This dire scenario, sir, often pushes vulnerable individuals towards extreme measures, either towards an uptick in the use of drugs, petty crimes, or suicides. Sir, we understand that this government has decided to put the number system on fifth gear by relying on headline-friendly numbers, turning the nation's progress into a clickbait economy. Sir, but this is reducing complex issues to attention-grabbing figures and potentially overlooking the nuanced aspects of comprehensive development. Sir, development isn't about tall buildings, housing tall claims. It is about the quality of life that can never be measured in numbers. Sir, एक कवि की एक दो पंक्तियां कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी. अगर गरीब और गरीब होता जा रहा है और धनवान होता जा रहा है, तो मैं कहूंगी मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है. मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है जो लोग आग बुझाने में लगे हैं. धन्यवाद सर. Thank you, Dr. Fauzia Khan ji. Now, Honorable Dr. M. Thambi Durai. 3 minutes, sir. Thank you, Mr. Deputy Chairman, for having given the opportunity to participate in the discussion on behalf of ADMK party. To begin with, it may be claimed that India is one of the fastest growing major economies of the world and that it is the 6th largest economy now. Sir, because of brief of the time, I'm going to subject. GST also plays its role in economic development. We hear a lot here from members of different states who state that the share of the GST pertaining to his or state has not been given, due to which their economy is suffering. The government should have a mechanism by which they are settled immediately without making the state suffer for want of money from the center. As far as the erstwhile government of Tamil Nadu is concerned, which is part of Indian economy, the ADMK government also suffered during the periods Honorable Amma Jayalalitha and Edappadi Palaniswamy as chief ministers. With all the constraints of the money, Honorable Amma was able to implement many welfare measures like giving laptops and bicycles to students, Amma canteen, Amma pharmacy, giving gold Mangal Chutra for girls at the time of marriage. During the period of Edappadi Palaniswamy as chief minister, despite of huge financial crisis, he also extended welfare programs for farmers, tackling situation during a corona period very efficiently. He also extended financial assistance, 2,500 crores for each family during the Pongal festival. He also made reservation, 7.5 reservation for government studying school students to get admission in MBBS course, and also he established 23 medical colleges for educational purpose, I am telling, sir. As mentioned, was mentioned by many members yesterday, we support the demand for the present government of Tamil Nadu for financial assistance to tackle the rain flood situation in Chennai, Tiruvallur and Kanjipuram due to cyclone. When earlier government faced such kind of flood situation, Amma government and Edappadi government tackled it very effectively, taking precaution measures. It also, sir, I want to say that present Chief Minister said this in 2020 is artificial flood situation. It's a natural situation. I couldn't understand what is the artificial situation, sir. Please, I would like to register that the present DMK government failed to tackle the adequate precaution measures to tackle the situation. In spite of spending 4,500 crores on drainage work, he failed to understand where the money has gone. Please. Sir, DMK government has to explain that inefficiency to tackle the problem, sir. Please. Sir, and also, I want to say, sir, your time is over. so what? Please, Sir, please Tamil Nadu is in India, sir.
Tamil Nadu is in India. Your time is What over. the DMK government is doing, I have the every right Your to time speak. is over. No, I am telling, sir, flood situation is havoc. In Tamil Nadu, people suffering, especially in Chennai. They cannot move. The present DMK government failed to tackle the situation. That's why he said. Thank you. They want 5,000 crores from you. Thank you. What happened? 4,005 crores, which are are already discussing national economy. They have to Please. explain where it's gone. That is the situation. Please. Sir, Please. the rain is not flowing there. The Please. liquor is flowing there. Please. There is ganja is there. But please, there is please. lot of No, inefficiency I'm there. calling- This is calling the tackle some that other is the people. government Please. is doing. Please. Thank you very much, sir. Thank you. माननीय अजीत कुमार भूयान, ऑनरेबल अजीत कुमार भूयान, ऑनरेबल अजीत कुमार भूयान, प्लीज 3 minutes, 3 minutes, please sit. No, nothing is going on. Please, you speak. Honorable Ajit Kumar Bhuyao, please speak. That will go on the record, please. Thank you. Nothing else will go on Chairman, record. sir, for giving me this opportunity. Please. Despite an impressive growth ratio Please. of 7.2% in the current financial year, ended by March 2023, the demand-side economy of the nation shows a very dismal picture. The demand for goods and services in India has been stagnant or declining due to various factors such as low income growth, high rate of inflation, massive unemployment, and inequality in income and wealth. Some members, they are talking about employment, and particularly ruling party members, their views are a part of propaganda and based on some lies. The unemployment rate for the country touches 3.2% for the year 2022-23 as per official report published by Center for Monitoring Indian Economy. As per NSO data, the rate of inflation in Indian economy is 5.02%, which is slightly declining from 6.83% in August 2023. Oxfam India's report on inequality in India, released recently, finds that first 5% of Indians own more than 60% of the country's wealth, and that is the reality. The extreme inequality in numbers put the whole Indian economy in a situation of serious concern. Sir, in the list of World Happiness Index published by United Nations Sustainable Development Solutions Network, India ranks at 126th position out of 150 countries for 2023. This is also a dismal picture for India. In accordance with the last SDI report, India ranked at 132 position out of 191 countries of the world. It is also a very serious concern for Indian economy that 2023 Global Hunger Index gives India a rank of 111 out of 125 countries, which was mentioned by Professor Yadav. I am from Assam, so let me speak few words on Assam. If we consider the state of Assam, the rank of Assam in India is 16 largest, 15 most populous, and 26 literate state out of 28 states of India. Please in conclude. terms of, sir, Please, 1 minute, time is half over. minute, 30 seconds. Yes. In terms of GDP, Assam's rank is 17th, 5.61 lakhs crore. Approximately 32.07% of Assam's population lives below the poverty line as per official statistics. Assam is in the list of India's 6th poorest state. Thank you, sir. Thank you. Thank you, माननीय अजीत कुमार भूया जी. माननीय रामदास अठावले. माननीय रामदास अठावले, not present. माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद बैस जी. माननीय वीरेंद्र प्रसाद बैस. Thank you, sir. Today, world economy is suffering very badly. At this critical time of the world economy, today we are discussing here about the economic situation of our country. Sir,
country like United Kingdom, Germany, developed country, they are very seriously getting strict about their economy, sir. New Zealand Prime Minister publicly announced inability to work, develop works, and resolve unemployment issue in New Zealand due to the poor economic condition. But in this critical juncture, India made unprecedented, historical economical development in our country under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, today inflation is going down and foreign exchange reserve in India today is all-time high, and infrastructure development going very fastly in India. This is the reality of Indian economy today, and which is acknowledged by the World Bank. World Bank in the recent reply, World Bank says in this critical time of the world economy, Indian economy is doing very well. This is not my opinion, sir. This is the opinion of the World Bank. Recently, they have published the bulletin, and in this bulletin, World Bank says the World Bank has also recognized unprecedented economic growth of our country, sir. As per the latest report of the World Bank, India continues to show resistance against the backdrop of challenging global environment, and according to World Bank's latest India development, India is going very fast, and India is unprecedentedly expand the economic diversion in India, sir. The World Bank flagship half-yearly report, Indian economy observed that despite the significant global changes, India was one of the fastest growing major economy in financial year 2022-23 at the growth rate of 7.3%, sir. India growth was second highest among the G20 countries, sir. Sir, recently we very successfully conducted the G20 summit in India, and India is India's ranked second, sir, among the G20 countries for the economic development. This is the present scenario of our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. In resistance was underpinned by the robust domestic demand, strong public infrastructure investment, strengthening the financial sector, blanketing growth increased 15.8%, sir. First quarter of the 22nd, 23rd year, sir. They compare with the 13.3% with the previous year, sir. Sir, Indian banking sector is a sound banking system, sir. India is following, sir, branch banking system, not like, sir, unit banking system of USSR. When major the developed countries, their banks set back. They closed down their bank, financially bankrupt. At that time also, Indian banking system doing very well, and they have played major role for the development of our country, sir. Sir, one more I like to say, many people say about the inflation. Sir, it is agreed by everybody, even when Chidambaram is spoken yesterday, he also admitted the inflation rate in last 3 months going down like anything in our country. This is the real situation of our country, sir. Sir, before independence, per capita income of Assam higher than other parts of the country, sir. And long time India was ruled by the Congress. During the period, our per capita is going down like any town. Sir, what is the region? Ji, please conclude. Yes, please, sir. your Yes, time sir. is over. What is the reason why per capita income of Assam going down, sir? I like to say due to the critical flood condition, and only for that reason, sir, our per capita income is going down. I appeal in this beautiful financial position, government should go some proper intention for the flood to resolve the flood situation of Assam, please sir. conclude. And sir, one more thing, sir, in our economy, tea industry played very important role, sir. For getting also foreign exchange,
tea industry played major role, sir. Now, Indian tea industry, especially Assam and West Bengal, suffering serious threat from Sri Lanka and Kenya, sir. Please. In this time, I like to request Government of India come forward to help tea industry of Assam for their growth to meet the challenge faced by the Kenya and Sri Lanka. Thank you very much, sir. Honorable Dr. Santanu Senji, 9 minutes. Thank you, sir. But before I come to my topic, I would like to strongly protest the pose and posture of one of our cabinet minister, targeting the only lady chief minister of the country just few minutes back regarding one film festival. Please speak. I can show you the video if you want. I strongly... Please speak on the subject that Thank you, but it should be noted, sir. Sir, so far the economy is concerned, there are two pictures of Indian economy. One is the picture of privilege and the other one is the picture of poverty. Sir, we live in India where 6 out of 10 Indians survive on less than 260 rupees per day. So far the global hunger index is concerned, it's very unfortunate to remind you that India ranks 111 out of 125 countries. 30 suicides per day due to poverty or unemployment. Sir, we live in India where on hand we are talking about multi-trillion economy, but on the other hand, almost 550 lakh people are pushed into poverty due to healthcare cost and mainly due to out-of-pocket expenditure. And at the same time, targeting few states, they are withholding the money for National Health Mission, which is depriving the common people at large of those particular targeted states like West Bengal, which can be won over by political path. Sir, we live in India where it would take more than 200 years for a minimum wage worker in rural areas to earn what the top paid executive at an Indian company earn in a year. Sir, so far this NREGA is concerned, it is very unfortunate though a sizable amount of Indian population depend on NREGA. In the last budget, the budgetary allocation for NREGA has been cut down by more than 33%. And we have seen our learned Prime Minister talking about NREGA, that ye to mati khodne ka kaam hai. And we have seen in the budget it has been decreased. 154 farmers and daily wages and laborers, they die by suicide every day. Sir, so far this NREGA is concerned, in our state of West Bengal, let me tell you, there are more than 21 lakhs of people who have already done their job and they are still deprived of their wages for last 2 consecutive years, despite repeated official verbal intimations, sir. So many teams have gone, and in the name of investigation, they have raised few excuses. Sir, I would cite an example and in reply given in today Lok Sabha regarding the fake job card. Out of 7.4 lakhs fake job cards found in the country as a whole, 3 lakhs from Uttar Pradesh. Double engine Sarkar. 1.15 lakhs from another state being run by an unofficial ally of BJP, Orissa. 47,000 found in another state run by another friendly political party of BJP, Andhra Pradesh. Sir, and so far the Bengal is concerned, it's only 5,000. And so far the job card Aadhaar link is concerned, West Bengal ranks second. In Andhra Pradesh it is 99.7%. In Bengal it is 99.68%. But even then Bengal is being deprived of their fund. Sir, 21 lakhs people are getting deprived, including one lady from our Hooghly district, Nupur Hatti, which has been spoken by our leader of our party, Derek O'Brien, yesterday. Sir, I was not here to raise the issue of Gini coefficient, but I have seen my colleague, a nominated BJP renowned lawyer, who was talking about Gini coefficient, addressing our leader of the party, Mr. Derek O'Brien, who does enough research to put forward any record.
And let me give you the fact. He was talking about the Gini coefficient targeting West Bengal. I will give you the data of Gini coefficient in the entire country, sir. The Gini coefficient in India is forecast to amount to 0.35 in 2023. The number of people in India who are earning less than $2 per day is forecast to amount to 0.16 billion in 2023. This is for my beloved colleagues, sir. Sir, we live in India where we are having the maximum possible unemployment in last 45 years. Per capita income in India, it is even less than 1/5 of that of China and less than 1/32 that of USSR. Sir, we live in India where green curtains gracefully conceal the harsh truth that over 40% of Indians' urban populace calls slums their home. We can recall that day of Namaste Trump when 4-feet wall was built just to conceal the actual scenario because the friend of learned Narendra Modi ji, Donald Trump, was supposed to visit our country. That is the harsh reality, sir. Sir, in India, we found 8 November 2016, demonetization. We know what the effect was, how the poor people suffered from this. Sir, we live in India where 2% tax wealth tax on 100 billionaires can feed the children under the midday meal program for 3.5 years, and where 3% of wealth tax on the Indian billionaires can fund the National Health Mission for 3 years. So far the Awas Yojana is concerned, 11 lakhs 33,000 people are being deprived. Several teams visited our state of West Bengal in the name of national level monitors, in the name of central team. What did they do? 69 teams visited, sir. Our minister came on 7 November 2022. Then on 24th November, entire data was supposed to be given, and in due course of time it was put in the portal. Several inquiries were there. Action taken report was submitted in due course of time. Again on 5th of November, questions were raised and that were replied on 28th of November. But till date, no fund has come. And once again, on this 1st of December, another intimation has gone to our government of West Bengal that again 7 team will visit 14 districts of our state of West Bengal. Why, sir? Why, sir? Is it the reason that only it is being run by Trinamool Congress and Madam Mamata Banerjee cannot be defeated politically? Yes. Is it the only reason? Just tell me one state other than West Bengal which is being deprived in the same fashion, sir. Yes. You can't. Sir, let me tell you the India's external debt. It rises up to $629 billion. It is the report given by RBI in June 2023. Sir, total debt per Indian over 9 years has increased by 2.5 times, and outstanding debt on Government of India was 55,587 lakhs in 31st March 2014, and it has become 15531 lakhs on 31st March 2021. Courtesy our BJP government, sir. Sir, every Indian have a loan which they haven't taken. 2014, per capita loan, 43,214. And in 2023, it has become 1,09,373. Courtesy our BJP government, sir. Sir, let me tell you the fact. So far the House is concerned, 63% of women of India and 35% of men, they don't have their own houses, sir. So far the cooperative federalism is concerned, it hardly exists in the recent scenario, sir. So far the migrant laborers are concerned, we are talking about economy, but COVID has unveiled the real scenario. We have seen the migrant laborers, they are working from one place to another. They are carrying their parents on their shoulder. Our government has taken no step to solve the issues of these migrant laborers, sir. COVID has shown the path, but unfortunately, our government never takes any lesson from this incident, sir.
Sir, so far the unemployment is concerned, just 1 minute, sir. Center for Monitoring of Indian Economy speaks about unemployment. Highest unemployment in last 45 years. More than 40 lakhs sanctioned central government posts are there. 30 lakhs employees are there. And more than 9.6 lakhs posts are lying vacant till date. That is the real scenario of Indian unemployment, sir. Unfortunately, so far the literacy is concerned, there is tremendous gender disparity in the literacy. Census, we don't know when it will take place. Sir, just 30 seconds. I will finish by saying, sir, we are celebrating 75 years. That we have is two different ideas in India and a story called survival of the richest. Let us strive for true equality and create a society where not a single individual is left behind. And my final comment will be, sir, we are very happy to take part in this short duration. Earlier it was for 4 hours, now it has been extended for 8 hours. We are really very happy. My two suggestions. Why can't we have the same type of short duration discussion on the cooperative federalism, sir? Why can't we have? And lastly, I have got one question in my mind, if I can be satisfied by your reply. Government is giving so much of time for short duration discussion. I'm sorry. Are they not having any business, sir? That is the question in my mind. Dr. Dinesh Thank you very Sharma. much. Dr. Dinesh Sharma. Dr. Dinesh Sharma. सम्मानित सभापति महोदय, आपकी कृपापूर्वक अनुज्ञा से आज आर्थिक विषय पर मैं इस विद्वत समूह के समक्ष कुछ विचार रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है और ये एक वो समय था जब विदेश के लोग भारत की खराब छवि को प्रदर्शित करते थे और वृत्तचित्रों में उपहास उड़ाते हुए हम सब देख लेते थे कि कहीं गरीब, भूखा, नंगा और इस प्रकार का आवृत्ति वाला व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है उसको भारत का नागरिक बता के वृत्तचित्रों में दिखाते थे। आज मोदी जी के आने के बाद 9 वर्ष का जो समय गुजरा है उसमें आज वही भारत का नौजवान हाथ में कंप्यूटर लिए हुए जब विदेश में जाता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहो, ये ऐसा ना हो हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। ये मान्यवर, ये अर्थव्यवस्था का जो एक स्वरूप बदला है उसका मूल कारण रहा कि क्रमागत तरीके से एक विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक बिंदुओं को छूने का प्रयास इस भारतवर्ष में 9 वर्षों से लगातार किया गया है। जो भी यहाँ की योजनाएं थी केंद्र सरकार की, उनका कनेक्शन एक योजना का दूसरे योजना से कनेक्शन रहा है। और जब हम सब जानते हैं कि जब जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था तो लोग उपहास उड़ा रहे थे। 25 लाख के या उससे थोड़ा सा 50 लाख के अंदर खाते हुआ करते थे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में। आज 55 करोड़ के आसपास आज जनधन के खाते हैं और मान्यवर बताते हुए ये मुझे प्रसन्नता होती है कि अर्थव्यवस्था का बदलाव कैसे हुआ कि आज उनमें जिन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक निश्चित राशि को जमा करें, फिर भी हमारे देशवासियों का हौसला देखिए कि आज 4,000 रुपया से भी अधिक औसत जो बचत खातों में धनराशि है, इन 55 करोड़ जो खाते हैं उनमें 4,000 रुपये औसत खातों में आज जमा है। इसके समय हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप में ये प्रगति हमारे देश का परिचायक इस बात का है कि हमने स्वदेशी को अपनाया, हमने उत्पादन को बढ़ाया, हमने जो लघु उद्योग थे, जो गांधी जी कहा करते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, हमें बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, तो आज हमने ना केवल MSME को बढ़ाया, हमने न केवल मुद्रा लोन देकर करोड़ों लोगों को उद्यमी के रूप में परिलक्षित किया, बल्कि हमने स्टार्टअप के माध्यम से हमने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों के सृजन की प्रक्रिया को तेज किया। मान्यवर, आज भारत एक तेज विकास गति से बढ़ने वाला देश बना है। भारत की मजबूत जो अर्थव्यवस्था है उसने भारत की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसको बढ़ाया है। आज ये देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है।
और इस 9 वर्षों में हम कह सकते हैं कि उस भारत में हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के हम बिल्कुल निकट पहुंचे हैं। ये देश महिला, युवा, किसान, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित लोगों का देश बन चुका है। आपके संज्ञान में ले जाना जरूरी है कि आज ये सरकार के समावेशी प्रयासों के माध्यम से सरकार ने 13.5 करोड़ के से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया है। आज पीएम किसान सहित कई योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं जो को बड़े पैमाने पर सशक्त करने का प्रयोजन चला है। रोजगार मेलाओं ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं। आज भारत का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहा है। कृषि उत्पादन के मामले में आज नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मान्यवर, ये वो भारत है जहां पर करों का भार पड़ा करता था। 17 करों का समावेशन करने के बाद में उनका सरलीकरण किया गया। आज कई गुना, मैं तो कहूँगा कि 50 गुना ज़्यादा आज करों का जो संग्रह है, उस संग्रह ने आज पूरे भारतवर्ष को ये दिखाया है कि अब भारत याची नहीं है, भारत वो देश नहीं है जहां जरूरत पड़ने पर कांग्रेस शासनकाल में अमेरिका से सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आता था और यहां आने के बाद राशन कार्ड में लोगों को वो बंटता था। वो लाल रंग का गेहूं वहां के जानवर नहीं खाते थे तो वो हिंदुस्तान को भेजा जाता था। आज इस देश में आप देखो तो यहां पर 5 किलो अन्न आज 2.5 वर्षों से कोरोना के बाद भी आज वहां मुफ्त में लोगों को देने का काम यहां पर किया जा रहा है और आज इसके कारण यहां को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का क्रम सतत जारी है। मान्यवर, आज अभी हाल में वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आज हम ये कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हालांकि पहले हम 10वीं अर्थव्यवस्था में थे या उससे पहले 11वीं अर्थव्यवस्था में थे। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था के बनने के पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP जिसे बोलते हैं, उसका अगर आकलन किया जाए तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हो चुका है। आज भारत का नागरिक जब विदेशों में जाता है तो भारत का नागरिक सर उठाकर देख सकता है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो GDP पिछली तिमाही में हमारा 7.6 हुआ है, इसने भी बहुत लोगों को चौंकाया है। आज चीन कराह रहा है मुद्रास्फीति के कारण, आज जर्मनी अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा है मुद्रास्फीति के कारण, अमेरिका में आज हलचल मचा हुआ है और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है और आखिर में उसकी स्थिरता आ सके तो भी एक सनातनी को लाकर प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है और जब सनातनी आता है तो वहां की वो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करता है। लेकिन वही भारतवर्ष है जो आज नीचे से उठकर आज 7.6, जबकि विश्व की वैश्विक दर जो है वो आज 3% के आसपास है। आज IMF सराहना कर रहा है भारत की, ग्रेडिंग कम कर रहा है चाइना की और भारत आज विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में G20 में उभर कर आया। उसका मूल कारण यह था कि हमारे उत्पादन बढ़े हैं, हमारा उपभोक्ता का जो अंश था उसमें उपभोक्ता के अनुसार हमने डिमांड को क्रिएट किया है। आज हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में हुआ है, आज निर्यात संवर्धन की नीति आज पांव पसार रही है, आज आयात कम हुए हैं, आज स्वदेशी के कारण हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन की लागत प्रति इकाई कम होती जा रही है। इसका यही वजह है कि भारत आज वो भारत बना है जैसी कि व्याख्या लोग कर रहे थे कि बंगाल 8.5% है। अरे बंगाल तो समृद्ध देश हुआ करता, समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। अंग्रेज जो सोने की चिड़िया समझकर बंगाल में आए, हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे पहले वो आर्थिक राजधानी के रूप में बंगाल में गए थे। बंगाल में विभिन्न प्रकार के जब शासन आए तो क्रमागत रूप में उनकी आर्थिक व्यवस्था का ह्रास होता गया। आज ये दुख की बात है कि एक समय रोजगार के लिए लोग कहीं जाते थे तो वो बंगाल जाया करते थे। मुझे खुशी है कि कोरोना के कार्यकाल में तमाम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश में उनको स्वरोजगार मिला। आज बंगाल के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं श्रीमान कि आज की बदलती हुई स्थिति में ये 13.5 करोड़ लोगों को जो हमारी सरकार ने गरीबी के रेखा से ऊपर किया है, पीएम किसान सहित योजनाओं ने अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त किया है। रोजगार मेलाओं के माध्यम से आज रोजगारों का सृजन हुआ है।
केवल नौकरी देने से रोजगार नहीं होता, हम अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देते हैं, हम नौकरी भी देते हैं और स्टार्टअप से हम नौकरी को क्रिएट भी करते हैं। हम विभिन्न प्रकार का पूंजी निवेश को बढ़ाते हैं, हम सोना नहीं बेचते, हम अपनी निधि का सृजन स्वयं किया करते हैं। और आज अगर आप देखो तो निरंतर बढ़ते हुए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उससे डिजिटलीकरण के प्रतीक के रूप में भारत नित्य नए शिखरों को छू रहा है। अभी हमने त्यौहार मनाया, दिवाली मनाई, हालांकि पहले तो त्यौहार होते थे हमारे उत्तर प्रदेश में तो कर्फ्यू लगा करते थे कि दिवाली आई तो कर्फ्यू, ईद आया तो कर्फ्यू। अब की दिवाली में पूरे देश ने 4 लाख करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया है। ये एक भारत की समृद्धता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो काशी का विश्वनाथ बाबा का जिक्र करती है, वो मथुरा का करती है, वो अयोध्या का करती है, लेकिन मोदी जी की सोच देखिए कि आज कई गुना जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कई गुना लोग आज वाराणसी में आने लगे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। आज कई लाख लोग ज्यादा अयोध्या में आ रहे हैं जो श्री राम लला का मंदिर बनने के लिए जा रहा है। धार्मिक आस्था का भी सम्मान और साथ साथ में आर्थिक समृद्धि का भी आयाम। ये नीति केवल उसी की हो सकती है जो निष्पक्षता के भाव से काम करे। मान्यवर, आज जो वैश्विक रेटिंग हुई है उसमें 2030 तक अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया की इकोनॉमिक पावर, वो 2027 तक भारतवर्ष बन जाएगा। भारतवर्ष में अगर देखो ये मुद्रा योजना मोदी जी लाए, आज 8 करोड़ लोग उद्यमी बन चुके हैं। अगर आप देखो ये कहते हैं रोजगार सृजन की बात, ये रोजगार सृजन के बाद 2014 में ये केवल 350 स्टार्टअप थे, आज 1,25,000 स्टार्टअप हैं और 110 से अधिक यूनिकॉर्न एक्टिव हैं। यह देश में लोगों की औसत आय भी बढ़ी है। मैं आपके संज्ञान में बताना चाहता हूं कि आज जो आयकर विभाग के जो आंकड़े हैं उन्होंने ये कहा कि 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी, आज 2023 में बढ़कर ये 13 लाख रुपए हो गई है। ये समृद्धि और आर्थिक ये विश्लेषण नहीं होता तो ये आय बढ़ती कैसे, कहां से पैसा आया? ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो थे ऊपर ही हुए थे उन पर रोक लगाई गई, जो भ्रष्टाचार था उन पर रोक लगाया गया और उन पे रोक लगाने के बाद में जो पैसा आया, जनता का पैसा जनता के खातों में पहुंचाया गया। यह मोदी नीति है और इस मोदी नीति के कारण आज बदला हुआ जो परिदृश्य है उसमें आज आईआईटी खुल रहे हैं, आज आईआईएम खुल रहे हैं, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये आज ये सांप्रदायिक दंगों वाला प्रदेश नहीं है। आज ये सनातनियों का विरोध करने वाला देश कुछ जगह पर लोग हो सकते हैं लेकिन पूरा देश नहीं है। आज ये देश का सम्मान बढ़ाने वाला देश बना है। ये अब सोने की चिड़िया नहीं रहा कि सोने की चिड़िया होती थी, विदेशी आते थे और पंख उखाड़ कर चले जाते थे। अब ये सोने का दहाड़ता हुआ शेर वाला देश बना है और ये मोदी देश ये इस देश की आर्थिक संपन्नता के लिए आगे जाने वाला है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि रोजगार कैसे बढ़ता है। 9 साल पहले खादी ग्राम उद्योग में केवल 25-30 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय था, आज 1,30,000 करोड़ से अधिक ये स्वदेशी उत्पाद बढ़ चुका है। ये स्वदेशीकरण की जो प्रक्रिया है, अब भारत हथियारों को खरीदने वाला नहीं है, अब हथियारों की सप्लाई करने वाला भी देश बन गया है। अब अगर आप देखो तो भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। ये पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा आज भारतवर्ष का ये एक आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा है। आज मोबाइल के क्षेत्र में भारत पूरे दुनिया का नंबर 2 का बना है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी मंत्रालय मेरे पास में था और मैंने देखा कोरोना के समय चाइना से कंपनी भाग रही थी, वो वियतनाम नहीं जा रही थी, वो कोरिया नहीं जा रही थी, वो हिंदुस्तान में आ रही थी और हिंदुस्तान में भी वो उत्तर प्रदेश में आ रही थी। आज 100 मोबाइल बनता है तो 65 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बनता है और उसके उपकरण भी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। ये बदलते हुए भारत का जो स्वरूप है, ये केवल मोदी योजना जो थी, मोदी जी का जो एक निष्पक्ष भाव से, समर्पण भाव से अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जो चक्र था, उसके कारण हुआ है। आज उपभोग साल दर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 61%
और डिजिटल ट्रांजैक्शन के राशि में 47% की बढ़ोतरी हुई है। यही नया भारत है, ये नव भारत का उत्थान है। ये वो भारत नहीं है कि अब वो कटोरा लेके दूसरे को वहां भीख मांगने जाएगा। हम याची नहीं हैं, हम दाता बन गए हैं। वही भारत जब यहाँ पर एड्स होता था, मलेरिया होता था, यहाँ पर डेंगू होता था, तो वो देश दूसरों के सामने हाथ फैलाता था कि टीका दे दो, टीका दे दो। कई गुना दामों पर वो टीका, वो वैक्सीन मिला करती थी हिंदुस्तान को, और सालों बीत जाते थे, हजारों लाखों लोग मर जाते थे। यही आया, कोरोना आया, पूरा विश्व कराहा, दसियों लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका ऐसे जगह पे हुई, लेकिन भारत में 3-3 वैक्सीन बनी और भारत ने 120 देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। ये बढ़ता हुआ देश है मान्यवर, ये बढ़ता हुआ देश है। और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा, लोग अमेरिकन डॉलर और ये डॉलर इसका उल्लेख किया करते थे। आज G20 का सिरमौर बनके जब से भारत आया है, 18 देशों में रुपयों में ट्रांजैक्शन होने लगा है। भारत की मुद्रा बढ़ रही है, भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। और आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है, अब कोई कहने वाला नहीं है कि 100 रुपए भेजते हैं, केवल 85 का गबन हो जाता है, 15 रुपए पहुंचते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम से 100 रुपए भेजते हैं, तो 100 का 100 रुपया आज जनता के खाते में पहुंचता है। ये बदलता हुआ भारत है। और इस बदलते हुए भारत में मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का भी एक डाटा आया है, और उस डाटा में ये पता चलता है कि विभिन्न आय वर्गों में टैक्स बेस बढ़ा है। हर वर्ग में टैक्स फाइलिंग में कम से कम 3 गुना की वृद्धि हुई है। ये पारदर्शिता है मान्यवर, ये ईमानदारी है मान्यवर, ये स्वच्छताकारिता के साथ में काम करने की प्रवृत्ति का नाम है कि आज लोग स्वेच्छा से करों को देने के लिए आगे आए हैं। मान्यवर, मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज पहली बार आपके इस विद्वत समूह में बोलने का सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया है, और ये मेरा एक बेनिफिट का एक अपेक्षा है कि मुझे कुछ समय आप दें। पहली बार मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं अपेक्षा ये करूंगा कि थोड़ी समय आप मुझे देंगे। मेरा हाथ तो बंधे हाथ है, जो टाइम अलॉट किया हुआ है उसी के हिसाब से। नहीं, पहली बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए बेनिफिट मुझे आपको 15 मिनट दे चुके हैं, और 1 मिनट आप बोल दीजिए, और 1 मिनट बोलिए। मान्यवर, मैं आज ये कह सकता हूं प्लीज कि आज जो है पूरा भारतवर्ष जिस तरीके से तेजी से विकसित हुआ है, इस भारतवर्ष में आज जो लोगों की भावना बढ़ी है, उन्होंने भारत को कहा है भारत के बारे में कि ये वर्ष भारत का नहीं है, ये सदी भारत की होने वाली है। ये सदी भारत की है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये सुदृढ़ होगा, आत्मनिर्भर होगा, विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा। आखिर में मैं सम्मानित विपक्ष से कहूंगा, मैंने बड़े सपने सजोकर मैं आया था मान्यवर कि विद्वतजनों के समूह में बोलने का अवसर मैं पाऊंगा। विद्वतजन हैं भी, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे फुटबॉल का मैच होता है तो आप देखते हैं कि रेफरी भी दौड़ता है और फुटबॉल के खिलाड़ी भी दौड़ते हैं, लेकिन दोनों के उसमें अंतर आता है। खिलाड़ी दौड़ता है गोल करने के लिए और रेफरी दौड़ता है वो गलती निकालने के लिए। मैंने देखा कि विपक्ष की भूमिका रेफरी की भूमिका बनी है, लेकिन रेफरी भी नकारात्मक भूमिका में अगर आ जाए तो निश्चित रूप में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण से ये सरकार का एक सकारात्मक दृष्टि है। मैं तो आह्वान करूंगा कि विपक्ष आगे बढ़कर आए और मोदी जी के सुशासन का एक सहभागी बने। ये आर्थिक रूप में सुदृढ़ इस भारत राष्ट्र की संप्रभुता जो पूरे विश्व का सिरमौर बनने की तरफ अग्रसरित है, उसमें उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत ही जोशीला भाषण था आपका, धन्यवाद। नाउ श्रीमती JB Mathur Hisham. Thank you, sir. I thank Congress Party, Congress President Mallikarjun Kharge ji, CPP Chairperson Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, and CPP leadership for giving me this opportunity to make my maiden speech here in this august house, especially on the important topic of the state of economy of our nation. Today, we are at the very end of the second term of BJP government. Sir, we have had nearly
10 years of BJP and Modi ji's rule. And our Honorable Prime Minister loves to compare Congress Party's 60 years of governance with his 10 years. Sir, in 60 years of Congress rule, led by Nehru ji to Manmohan Singh ji, our nation grew from the depth of a resource-starved economy which the British left us with at the time of independence to, in 2014, to become one of the 10th largest economies of the world and having built the foundation and springboard to grow further. With this strong foundation laid by Congress Party, our nation's economy has grown naturally since independence and after 2014 also. However, the phase of growth which is claimed by BJP government is also under clouds of suspicion as several indicators such as poverty, unemployment, health on the ground points to the contrary. More importantly, sir, at what cost has this growth claimed by BJP government been since BJP came to power? This is an important question for us to decipher the cost of this growth claimed by BJP government that our nation has had to pay since BJP government came to power. Sir, let me put forth few important points in this regard. First, our nation's debt, which stood at rupees 58.60 lakh crore, that is 52.20% of GDP, as on 31st March 2014, today is rupees 155.60 lakh crore, that is 57.10% of GDP, which means the debt on every Indian has increased by 2.53 times in the last 9+ years. The astronomical increase in the government's debt due to the Modinomics means that each Indian today has a debt. India's per capita debt is today rupees 1,09,373 compared to rupees 43,124 in 2014. I very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to adding 66,249 debt in 10 years of your government versus 43,124 in 60 years of Congress governments onto the shoulders of every Indian in your 10 years of heading the government? Second, our nation had an unemployment rate of 4.90% in the financial year 2013-14 when Congress Party was in power. The unemployment rate this financial year is hovering around 7.90% plus. I very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the unemployment rate in our nation, almost doubling in your 10-year term of heading the government? Third, India's ranking in Global Hunger Index was 55 in 2014. Today, India's ranking in the Global Hunger Index is 111 out of the 125 countries with sufficient data to calculate Global Hunger Index scores. I very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the ranking of the Global Hunger Index of our nation, falling from 55 to 111 in your 10 years term of heading the government? Fourth, India's ranking in the World Economic Forum Annual Gender Gap Report was 114 in 2014. Today,
India's ranking in the World Economic Forum Annual Gender Gap Report is 127. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the ranking of the World Economic Forum Annual Gender Gap Report of our nation, falling from 114 to 117 in your 10 years term of heading the government? Fifth, as per the World Inequality Report 2022, the average household wealth in India today is around 9,83,010. The bottom 50% of the nation can be seen to own almost nothing, with an average wealth of rupees 66,280 per household, or 6% of the total wealth of the nation. The middle class is relatively poor, with an average wealth of 7,23,930 per household, or 29.50% of the total wealth of the nation. The top 10% household owns 65% of the nation wealth, averaging to 63,54,070 per household. And the top 1% household owns 33% of the nation's wealth, averaging rupees 3,24,49,360. I respectfully ask, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the status of our nation as one of the most unequal countries in the world, with rising poverty and an affluent elite in your 10 years term of heading the government? Six, reducing fuel prices was very dear to our Prime Minister during the 2014 election campaign. Obviously, fuel prices hit at the root of an economy, and more so Indian economy. However, from 2014 to 2023, petrol price increased from rupees 72.26 per litre to 100 plus per litre, and diesel price from rupees 55.49 per litre to rupees 90 plus per litre between 2014 and 2023. Similar is the case with kerosene and LPG too. This, despite petroleum crude prices being exorbitantly high during 2014 versus the subsidized petroleum crude which we are getting from Russia since the Ukraine war. I respectfully, very respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the huge increase in the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG in your 10 years term of heading the government? Most importantly, sir, this is the most important. Indian rupees exchange rate with US dollar on 31st March 2014 was rupees 59.90. Rupees exchange rate is by self-admission a matter very close to our Prime Minister's heart. Yesterday, Indian rupees exchange rate with US dollar fell to rupees 83.41, the lowest ever in the history of our country, the lowest ever in the history of our country. I respectfully ask our Prime Minister, what is your answer to the Indian rupee depreciating to its lowest ever rate in your 10-year term of heading the government? Eighth, in 60 years, Congress government built world-class infrastructure from effectively nothing in 1947. Today, the government, under the national monetization pipeline, is selling these national assets valued at an estimated rupees 6 lakh crore in public sector, one by one, to private sector, enriching the favorite friends of BJP. I respectfully, very respectfully ask the Prime Minister, what is your answer to your government handing over national assets to your favorite friends in your 10 years term of heading the government? I quote our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru ji, who our present government attacks
for all issues they cannot find solutions for, and for mistakes they cannot defend. Pandit Jawaharlal Nehru ji said, facts are facts and will not disappear on account of your likes. I can go on and on and on about various factors and statistics connected to the dismal state of economy, from inflation to price rise to Manrega state to Skill India to Beti Bachao to Beti Padhao and so on and so forth. Of course, then my senior colleagues from the treasury benches will ask few pointed questions. First question they would ask would be, isn't the economy growing? And we have our answer is, serious questions remain on the realness of the growth claimed by BJP government, as the economy is exhibiting several contra indicators to the claims of the BJP government. Another question which they would ask would be, isn't FDI coming to India? And what we wish to say is that it is only natural that FDI come to India based on the open door liberalized regime initiated by the Congress government, and the reality that MNCs cannot ignore a market as large as India, which the stage was set by the Congress party. Yet another question, the chest-thumping question post the recent election is, did we not win the recent state election? My treasury, from the senior colleagues from the treasury benches, almost all said that. And we wish to say you did win, but very few media has reported that more Indian citizens, Hamare Deshwasi, voted for Congress party than BJP. About 11 lakhs more Indians voted for Congress party, where BJP polled 4.81 crore votes, Congress party polled 4.92 crore votes. So, we, the Congress party, has been in the heart of India for 138 years, and we, the Congress party, is in the heart of India now, despite you wishing us away, and we, the Congress party, will remain in the heart of India despite you wishing for Congress Mukt Bharat. We will continue to oppose your wrongdoings, and we will continue to expose your jumlas. Our India is great. We will work to make her even greater and the greatest in the world. Jai Hind. Thank you. Now, Sri Jawahar Sarkar, your time is 5 minutes. 5 minutes. Thank you, sir. Mr. Jethmalani before me has described lies as lies, big lies or white lies, and statistics. There is a fourth category of lie that I would like to bring to your attention. Mr. Sarkar, 1 second. Lie is not allowed in Parliament. Modified, sir. But to the extent that I would like my friends in the House on both sides to be aware of the realities. They keep talking about GDP growth. I'll not contest it because it's too complicated for many to understand. But what does GDP growth mean where I am concerned and you are concerned? And that is per capita GDP, per person GDP. The GDP of Ambani and the GDP of Adani does not matter to me. On per capita GDP, we just had the G20 meeting, and there we made a calculation that the US has $63,000 by way of their per capita GDP. Australia has 61,000. Indonesia has $4,000 plus per person. And India is the lowest, I repeat, the lowest among the group that has just $2,085 per GDP. So look at realism. Don't go in for bravado and bragging. When you talk of GDP, you must remember that you are taking the wealth of the upper 5% to inflate your figures. I'm just giving an example of how the upper
crust has increased its wealth. The Ambani wealth was 1.6 lakh crores in 2014. I repeat, 1.6 lakh crores in 2014. It is 8.6 lakh crores today, 5 times more. Please show me an Indian who has grown his income in the last 9 years by 5 times before you make further statements. Adani's went up from 1.2 lakh crore. This is more phenomenal, but I will not get into the details. 1.2 lakh crores, they have gone up to 6 lakh crores plus, which is again another 5 times growth. No Indian has ever gone through this growth during the last 9 years. So do not take credit for enriching the oligarchs. Do not take credit for enriching and fattening the capitalist class and then say, we grew as a whole. Now look at your reality. World Bank's unemployment figure. I'm quoting for the World Bank because most Indians and foreigners have given up on Indian statistics. It is so punctuated with untruths. Now, the World Bank's 2022 unemployment rate shows that India is 23.2%. 23% unemployment. Compare it with Pakistan, a failed state. Pakistan is 11%, less than half. Compare it with Bangladesh. Once upon a time, a basket case. Bangladesh is 12.9, 13%, and we are 23%. Sharam se doobna chahiye sabko. Bhutan is 14.9%. So where are the realities that you are drumming about GDP and becoming the 4th biggest and 3rd biggest in the world? Come to reality. The annual survey of industries is pointing out that we are steadily moving towards contractual labor. We are turning a rightful, respectful wage earner into a product that is at the mercy of the employer insofar as labor, timing, and everything is concerned. I come to the labor participation ratio. The labor participation ratio, the labor minister was here but doesn't seem to be too unduly interested. The LFPR, the labor force participation ratio in India, is one of the worst in the world. I repeat, at the cost of perjury, one of the worst in the world. It was 42 to 45% was the rate of unemployment, participation of labor. That means the vast majority were outside the network of labor. Mercifully, it has gone up to 50% now. 50%, but look at the other countries. Nepal, 83%. Nepal is able to provide labor force participation of 83%. Again, Bangladesh, twice more. China, 60%. So what are we talking about? I am talking, this one is of course relates to the female labor participation ratio, where I repeat the figures. India is only 20.5%, Nepal 83%, Bangladesh 30+%, China 60%, and even Sri Lanka, that was on the verge of collapse, they have a female labor participation ratio of 1.5 times ours. When it comes to male and female combined, we have been between 42 and 45% through the entire regime of the last 9 years. I repeat, 42 to 45%, one of the lowest in the world. It has just gone up to 50%, just gone up. We look at gender gap. Jebi already mentioned about the gender gap. I repeat, compare the gender gap of India at 28% with double that in Bangladesh. She also mentioned about the rising debt. I repeat, debt is increasing at a phenomenal rate, and we are binding future generations, your grandsons, your sons, my sons and my grandsons, to a debt that we are not entitled to. Thank you. Thank you, Mr. Sarkar. To GDP ratio. Sir, one moment. It's a debt to GDP ratio has come to almost 90%. Sir, just one last word on defaulters, on banks, just one word. We were coming around to the banks, defaults of the banks, and there, yesterday's figure, that's why I'm giving it to the House, is
14.5 lakh crores have been written off. Dr. Karad is sitting there. He insists that writing off means nothing, but I insist that writing off is actually the legitimization of the destruction of your funds and my funds kept in the bank. The corporate sector, Sorry, sir, I repeat before the House, and I can give the calculation, thanks to the cooperation, thanks to the transparent reply given by Dr. Karad and others, the corporate sector alone has liquidated 10 lakh crores in 9 years. 10 lakh crores has gone down the drain to save the corporate sector, whereas Narega, there was a minister somewhere here who alone has destroyed one state. The poor of the state, curse him morning and evening, curse him morning and evening. That. Sir, thank you. Sir, don't deduct it from my time, sir. No, Mr. Wilson, please. It is not being recorded. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, a lot of discussions has happened in this August House, and my earlier speakers have said about how the economic conditions of our country has deteriorated. Sir, I wanted to point out few. When you came to power in the year 2014 and re-elected in 2019, what did you promise? Did you implement these promises? I remind you some of the promises which you have made. You said you will reduce the LPG price, petrol and diesel price. You promised 15 lakhs in each of person's bank account. What happened to the same? You promised that you will link 60 rivers at the cost of 5.5 lakh crores. What happened to it? You promised 5 trillion economy in the year 2019 to win over for the second time. What is the economy today? In 2016, you promised double farmer income by 2022. What happened to it? You promised cleaning of Ganga. You promised inland waterway transport system. You promised 2 crore jobs, controlling price. These all been reduced to mere words. Sir, today more than 10 lakh vacancies have been registered on the National Career Service portal. What steps have you taken to fill these vacancies? There is a failure in Make in India, Startup India, demonetization, GST regime. These policies have weakened the institutions and the economy, and these are the shining examples as to how today's economy is. Sir, Tamil Nadu is the 10th largest state in India, is the second wealthiest state by GDP, and is the second largest contributor to India's GDP. For every 1 rupee that Tamil Nadu contributes to the center, it gets only 29 paisa. This demonstrates the immense contribution made by our state. But what is the return? Today, I will delve into the stepmotherly treatment which my state is facing from the hands of the union government. However, the present government has been helping their corporate friends to earn homogeneous profits and showering non-existent promises to the citizens of the country. Sir, I wanted to ask a question whether the per capita income of every Indian citizen has increased. Sir, the villages are worst affected. There is no agriculture, there is no industrial growth, there is no jobs. Sir, the daily wages, low-income workers are the sufferers because of the price rise in the essential commodities. And, sir, they lead a very miserable life. You have sold
all the public sector undertakings which is available in India, the business owners have also been adversely affected by the rise in prices of the essential commodities, as they have been unable to cope up with the rising prices without having to raise the prices of their finished goods and making it difficult for them to survive in this competitive field. Sir, first of all, sir, I wanted to place how our state is meeting a stepmotherly treatment. Sir, there are 17 projects which were floated in Tamil Nadu by the National Highways Authority of India. About 11 projects are pending for more than 3 years because of non-allocation of necessary funds. Sir, the Ministry of Statistics and Programs, they themselves have uploaded in their website on 12/9/2023 that 42 projects in Tamil Nadu, that 2 important projects, including nuclear power projects, are delayed. Sir, my friend was talking about the corona and how it was dealt with. In Tamil Nadu, we have a vaccine park at Chengalpattu district. It was established at a cost of 2,000 crores. Tamil Nadu government has given vast lands. Sir, right from the day when that vaccine park came into existence and so much of investment is being made, not even one vial is being manufactured. Because of, sir, they wanted to promote some persons, private players in India, and they have kept these industries closed for many years. In spite of the Tamil Nadu government, our Chief Minister saying, please hand over this park to us. We will manufacture the vaccines. We will supply to the entire India during COVID time. The center showed their deaf ears. They refused to budge. Sir, insofar as the railway projects are concerned, sir, we have a bodybuilding, sir, a factory, that is integral coach factory in Avadi. Sir, if you see the railways, many of the units, sir, have been manufactured from this integral coach factory. But today, sir, saddest state is they are going to the foreign country and purchasing these coaches, leaving behind the factory which is already available in Tamil Nadu. Sir, in Chennai Metro Rail projects, sir, phase 2 project, sir, is pending with the Cabinet Committee of Economic Affairs, and the clearances is not being given for the last 2 years in spite of repeated demands. Sir, so far as the Food Corporation of India, the subsidy of 6,500 crores for the PDS rice is not being distributed to Tamil Nadu. Likewise, sir, CMR subsidy of rupees 5,704.09 crores has not been disbursed, sir, to Tamil Nadu. Sir, in CMRL, 50/50 equity shares requested similar to phase 1 is pending with Government of India for cabinet approval. Sir, so far as the Election Commission expenses, sir, 213 crores are pending. Sir, in so far as the Home Guards is concerned, sir, 77.76 crores are pending. Sir, in Tamil Nadu, we have the highest toll plaza, sir. About 55 toll plazas are located, sir. Each and every nook and corner. Sir, as per the Act, you should have only one toll plaza with every 60 kilometers. You can see about 16 excess toll plazas, sir, in Tamil Nadu. All the money that is collected, sir, in these toll plazas are not being utilized, sir, for road infrastructure in Tamil Nadu. And it is drained off. And, sir, the saddest part is the toll fee is increased every year and without any application of mine. Sir, one stretch, our Chief Minister even called the Highway Minister and said that this stretch requires an immediate attention. Sir, sad to say that 6 months have gone, that stretch is yet to be repaired, sir. That is in the Vellore stretch. Sir, so far as the sugarcane growers is concerned, sir, they are selling their yield, sir, to the mill owners, and no price has been paid to them, sir, for last 5 years. And, sir, these mill owners, sir, they are getting protection from the NCLAT, and that is how they are denying the payments.
Sir, so far as the spinning mills are concerned, sir, they are suffering heavy losses because of the increase in the price of the raw materials, high inflation, and slowdown in the global economy. Sir, in fact, our Chief Minister has written a letter requesting Union government to provide financial support for MSME in textiles sector, restructure the existing loans under emergency credit line guarantee schemes, and disbursement of fresh loans under ECLGS by reducing regular interest to offset losses. Sir, in fact, we faced a cyclone recently, and 4 days we had a heavy rainfall. And even today, sir, we are receiving heavy rainfall. Sir, in fact, our Chief Minister, sir, has demanded a sum of rupees 5,000 crores as an interim financial assistance. I only request, sir, my good friends, to see that the said financial assistance is sanctioned and disbursed immediately, sir. Sir, one thing I have to bring to your attention, sir. Sir, you are also a learned member of our fraternity. Sir, they brought this Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Sir, this law is legislated for industrial friends who wants to acquire industry, sir. Sir, under the garb of legal procedure, sir, they are liquidating many industries. Sir, the principles such as waterfall mechanism, clean slate theory, haircut, written off, wipe off the debts, these are all, sir, are the nomenclature, or, sir, they use it a term in order to wipe away the industries for a song. Sir, the regime is nothing but a way to buy expensive assets in discounted rates as they are purchasing through public money, and the public money has no real value in this nation, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Now, Sri Vijaypal Singh ji. Vijaypal Singh Tomar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आपका समय 5 मिनट अलॉट किया गया है। 5 मिनट अलॉट किया गया है आपका समय। 5 मिनट? हाँ। तो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो ज़्यादा बताया था। चलिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अपनी जीडीपी 7.6 है, जबकि चाइना की भी 4.9 रही है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि प्रधानमंत्री जब आए, उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर सिर नवा के 14 में ये कहा था, मेरी सरकार गरीब, वंचित, किसान और गांव को समर्पित है। तो कहा, जो संकल्प किया उस पर सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी किया। महोदय, चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने काम किया था। वो कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान, गांव और गरीब के से होकर गुजरता है। जब विश्व का सबसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था, गुजरता है। जब विश्व का सबसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था, तब देश के 80% लोग खेती में जुड़े हुए थे, गांव में रहते थे 82% लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं 50 साल तक राज करने वालों से कि वो घट के गांव में रहने वालों की संख्या 62% थी और खेत में काम करने वालों की 55% क्यों रही? क्योंकि उनको गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सभी सहूलियतें नहीं उपलब्ध हुई। प्रति व्यक्ति गांव पर 1/3 भी खर्च नहीं हुआ शहर के मुकाबले। इसलिए किसान की हालत मजदूर से नीचे चली गई और हालत ये हुई कि किसान खेती छोड़ने लगे। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर रहा कि हम किसान को, महिलाओं को, गांव को, गरीब को चिंता करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा हर किसी के पास मकान हो, मकान में शौचालय हो और उस मकान में गैस का कनेक्शन हो और बिजली का कनेक्शन हो, और रहने वाला गरीब, उसका बच्चा बीमार है, मर ना जाए, उस बीमारी के लिए आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हो। तो आज
माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण करीब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास आए, जिसमें 68.9% महिलाओं के नाम है। इसी तरह से वहाँ 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले, 11.5 करोड़ शौचालय बने। मुझे मालूम है, कहा करते थे, शाम का टाइम होता था, चौधरी साहब हर भाषण में कहते थे कि जब गाड़ी जाती है महिलाएं खड़ी हो जाती सड़कों पर। क्यों? इसलिए कि रोशनी पड़ती है, उससे बचने के लिए। उससे इसकी किसी ने सोचा नहीं था, इस कार्य को करने का काम किया। और करीब 12 करोड़ को, 60 करोड़ की जनता को कवर करते हैं, 12 करोड़ को आयुष्मान भारत के कार्ड देने का काम किया गया। महिलाओं को जहाँ मुद्रा बैंक से ऋण मिला है, वो भी करीब 58% से ऊपर महिलाओं को दिया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की पहले एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था हम तो 100 रुपये भेजते हैं, नीचे 15 पहुँचते हैं, 85 बीच में खाए जाते हैं। तो 2 ही काम प्रधानमंत्री जी ने किए। एक तो यह किया कि बीच की दलाली समाप्त, 100 भेजेंगे, 100 के 100 नीचे जाएंगे। और दूसरा काम यह किया कि जो गांव गरीब और किसान को संबंधित थी, उसके लिए वरीयता रखी। और इसीलिए जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है, रोजगार का मतलब अन्य क्षेत्रों से भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है माननीय मोदी जी ने? आपने देखा कि जब सरकार 50-60 साल तक राज करने वाले बताएं कि देश भर में 14 से पहले केवल 723 विश्वविद्यालय थे, आज कितने हैं? 1113। देश भर में 5298 डिग्री कॉलेज थे, आज कितने हैं? इन 9 साल में बढ़ के 43,796। 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, आज 23 हैं। 9 वर्ष में 15 बढ़े, 50-60 वर्ष में केवल 8 बने। 7 नए IIT, 7 नए IIM, नए 225 मेडिकल कॉलेज और 442 स्टार्टअप थे जो आज 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भूतल परिवहन मंत्रालय है, इसका बजट आपके टाइम में कितना था? लास्ट ईयर का देखते हैं, लगभग 34,000 करोड़। और इसी साल का, पिछले साल का बजट भूतल परिवहन मंत्रालय का 2,70,435 करोड़। और प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में आपके यहाँ 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, अब 37 किलोमीटर हाईएस्ट रहा है। वैसे एवरेज भी 29 किलोमीटर पर डे का है। दुनिया का सेकंड नेटवर्क है। ये काम नहीं हो रहा, इतना पैसा है। रोजगार, इसमें भी तो रोजगार होता है। इसी तरह मेट्रो रेल का है, 2014 तक 5 शहरों में 229 किलोमीटर थी, आज 20 शहरों में 860 किलोमीटर हो गई। विद्युतीकरण रेलवे लाइन का 2014 तक 21,413 किलोमीटर का हुआ था और इन 9 वर्षों में 58,424 किलोमीटर का हो गया। किसानों का बजट भी 6 गुनी वृद्धि की है। आपका 9-10 का बजट मैंने देखा, किसानों का, कृषि का 12,000 करोड़ यूपीए के टाइम का, और 5 साल का लगाओ तो 1,23,000 करोड़। हमारा 1,25,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था। तभी तो किसानों को हम उनकी सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। अभी कल माननीय मोदी जी ने भी कहा, एक DAP का बैग, मैं भी गांव से ही आता हूं, किसान से, एक DAP के बैग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4,070। हमारे किसान को कितने का मिल रहा है? हमारे किसान को मिल रहा है 1,370 का। एक यूरिया के बैग की कीमत है 2,450, हमारे किसान को मिल रहा है 266 का। और ऊपर का कौन दे रहा है? मोदी जी की सरकार दे रही है। NPK MOP जो 3200-2700 के हैं, वो 1,300 और 1,700 के मिल रहे हैं। तो इस तरह किसान को सब्सिडी देकर उसकी लागत नहीं बढ़े, MSP 1.5 गुना करने का काम किया। 6 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी, आपने क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 6 गुना किया। इस साल भी धान का 150 से बढ़ा के 400 रुपये मूंग पे प्रति क्विंटल बढ़े हैं। MSP बढ़ाने का काम किया, खरीदारी करने का काम किया। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसानों के जो इंटरनेशनल मार्केट में ये बचत हुई है, 2700 रुपये प्रति बैग की हुई है। यूरिया पर करीब 2450 रुपये प्रति बैग की हुई है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि जो हमारे रक्षा के क्षेत्र में अभी दिनेश जी ने बताया, माननीय दिनेश जी ने, 16,000 करोड़ के यंत्र हम निर्यात कर रहे हैं। पहले आयात किया करते थे, 4100 ऐसे आइटम्स हैं जो उसका आयात बंद हो गया है, यही निर्मित होने लगे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लगे हैं। हमारे जो 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए हैं, 80 करोड़ से अधिक मुफ्त राशन दिया गया है। जब दुनिया देख रही थी कोरोना में कि कोरोना में लोग मर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री को यूएनओ में कहा था कि यूरोप तो संपन्न देश है, भारत का क्या होगा। मोदी जी ने जब बुला करके अपने डॉक्टर्स को, अपने यहाँ के वैज्ञानिकों को, फार्मा कंपनियों को बुलाया और कहा सबसे पहले आनी चाहिए, 3 वैक्सीन पहले आई और अपने 222 डोज लगाई देश में और 110 देशों को भेजने का काम किया। और आज दुनिया को हम देने वाले हैं, आज लेने वाले नहीं हैं। भारत बदला है, ये मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है। आज हर घर नल से जल पहुंचाने की बात आई। माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ एक मिनट, प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं गांव में जाता हूं, मैं भी गांव में जाता हूं, मुझे तो कोई घर ऐसा नहीं मिलता। मैंने कहा अब तो इस जाड़े का सीजन आ गया, मक्का की रोटी बनाओ और साग, चूल्हा किसी का नहीं है। आज हर घर में गैस है और चल रही है, पाइपलाइन बिछी हुई है हर गांव में, वो लग गई हैं, पानी जा रहा है। करीब 8.5 इतने करोड़ हैं, 8.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन चले गए हैं। और जो कल भी बात आई थी, गरीब महिलाओं को किस तरह से मदद करने का काम किया, 27 करोड़ को सैनिटरी पैड समय हमारे, धन्यवाद, हमारे करीब 10,000 जनऔषधि केंद्र थे, अब 20,000 24 तक खुलने जा रहे हैं। सस्ती दवा गरीब को उपलब्ध हो, कोई गरीब का बच्चा मर ना जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और सरकार को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, विषम परिस्थितियों में देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है, 27 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसे निश्चित रूप से सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे और 47 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री राघव चड्ढा जी। माइक। अच्छे दिन का वादा करके ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, अच्छा दिन तो आ गया, और 2014 के बाद आज तक अच्छे दिन का शायद ही इन्होंने इस जुमले का प्रयोग किया हो। 2019 के चुनाव से पहले एक वादा जरूर किया, एक और ख्वाब दिखाया देश की जनता को कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे और 2022 जब भारत देश की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे तो अमृतकाल आएगा, न्यू इंडिया आएगा और हम ये बड़ी चीज़ें करेंगे। अब 24 का चुनाव आ गया, कम से कम 24 के चुनाव से पहले जो न्यू इंडिया का वादा था और 25 बड़े वादे जो इन्होंने किए थे कि हम 2022 तक ये हासिल कर लेंगे, उसका आकलन होना चाहिए। आज मैं वादा बनाम वास्तविकता की, वादा बनाम सच्चाई की पूरी सूची लेकर आया हूं और आपके सामने रखना चाहूँ। पहला वादा था कि 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। आज हम, सच्चाई ये है कि उस वादे से बहुत कोसों दूर है और सवाल ये नहीं है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर सरकार अपनी उंगली भी ना उठाए तो भी हम बन जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बनेंगे कब, 2027 में, 28 में या 30 में। लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा किया कि हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग सेवाएं होंगी 2022 तक। सरकार की अपनी रिपोर्ट ये बताती है, सच्चाई दिखलाती है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 की, कि हर 100 लोगों में मात्र 3 लोग ऐसे हैं, मात्र 3 लोग जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है और हर 100 लोगों में मात्र 1 आदमी, 1 औरत ऐसी है जिसके पास अतिरिक्त इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर है। ये सच्चाई है। जनधन योजना में अकाउंट तो खुलवा लिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, कभी मुड़कर उन अकाउंट्स की ओर भी देखा कि कितने खाते खाली हैं, कितने अकाउंट डोरमेंट हो गए। तीसरा वादा जो इन लोगों ने किया था वो था कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना कर देंगे। अब इस वादे की बात भी नहीं करते मैम। और आय तो छोड़िए, किसान का कर्जा दुगना करने का काम पिछले 5 सालों में सरकार ने किया। पिछले 18 क्वार्टर्स की सबसे लोएस्ट ग्रोथ
एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस क्वार्टर में देखी जा रही है, जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। चौथा वादा जो किया था वो था कि 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। सच्चाई आप जानती हैं कितने भारतीयों के पास अपना घर है। घर तो आम आदमी का घर छोड़िए, सांसदों तक का घर छीना जा रहा है यहाँ पे, ये सच्चाई है। पांचवा वादा किया था हर भारतीय के पास 2022 तक शौचालय होगा, यानी कि एक्सेस टू टॉयलेट होगा। अगर ये वादा पूरा हो गया होता तो ओपन डेफिकेशन भारत में बढ़ता नहीं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट ये नहीं बताता कि लगभग 20% इंडियन हाउसहोल्ड्स आज ऐसे हैं जो बिना टॉयलेट फैसिलिटी के जी रहे हैं, और जहां जहां एक कमरे का नाम के वास्ते टॉयलेट बना भी दिया वहां पानी का सप्लाई नहीं पहुंचा, सिर्फ इमारत खड़ी हो गई। छठा वादा किया कि 2022 तक हर भारतीय के पास 24 घंटे सातों दिन बिजली होगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसी एक सूबे में भी अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है भारत देश में, तो मैं चुनौती देता हूं सरकार के मंत्री मुझे बताएं आज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांव जाने की आवश्यकता नहीं है मैम। नोएडा चले जाइए और बताइए अगर नोएडा में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम 2022 तक इन लोगों ने पूरा किया हो। आज भी घंटों घंटों के पावर कट लग रहे हैं। सातवां वादा, एवरी हाउसहोल्ड विल हैव एलपीजी सिलेंडर। 2022 तक हर घर के पास एलपीजी सिलेंडर होगा। वास्तविकता यह है कि एलपीजी के प्राइस बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई, और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे आज वो एक बार सिलेंडर रिफिल कराने में भी उनकी नानी याद आ जाती है, जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है। आठवां वादा था एवरी इंडियन इन रूरल एरियाज विल हैव अ वाटर कनेक्शन बाय 2022। मैडम जस्ट लेट मी कंप्लीट। सांसद जी, डकैती शब्द सुबह अच्छा मैं उसको विड्रॉ करता हूं। आठवां डकैती शब्द को विड्रॉ करता हूं। आठवां वादा था हर भारतीय के पास जो ग्रामीण इलाकों में रहता है 2022 तक अपना पानी का कनेक्शन होगा। सरकार के खुद के मंत्री ने अप्रैल 2023 में राज्यसभा के पटल पर जवाब देते हुए बताया कि 40% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों, रूरल हाउसहोल्ड्स के पास आज भी टैप वाटर सप्लाई नहीं आता, नलके में पानी नहीं आता, ना नलका है ना पानी है। आगे चलता हूं। 10वां वादा सरकार ने किया था, 9वां वादा सरकार ने किया था कि 2022 तक भारत देश मैल न्यूट्रिशन मुक्त हो जाएगा, यानी कि कुपोषण भारत देश से 2022 तक खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सच्चाई यह है कि आज चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन में भारत देश दुनिया के मुकाबले सबसे खराब स्थिति में खड़ा हुआ है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताती है कि 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107, 108 पे खड़ी हुई है। यह स्थिति है। 74% भारत देश की आबादी हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास लोगों के पास इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। यह सच्चाई है। 10वां वादा किया कि हर ग्राम पंचायत के पास अपना फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा 2022 आते आते। सच्चाई यह है कि आज तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की जो स्थिति रूरल एरियाज में है उसका एक जायजा भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले तो पता लग जाएगा। लगभग 65% आबादी हमारे देश के गांव में बसती है मैम, लेकिन वहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी तक ग्राम पंचायतों के पास नहीं पहुंचा। 11वां वादा किया था कि 100% डिजिटल लिटरेसी 2022 तक आ जाएगी। सच्चाई यह है कि एनएसएसओ का डेटा आपको बताएगा कि अभी आप अपना आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं। 12वां और बड़ा दिलचस्प वादा, 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी हिंदुस्तान की सड़कों पे। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा का नारा है बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, देश की सैर कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आगे चलता हूं। 13th प्रॉमिस जो भारत सरकार ने किया था अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, वो ये था कि 2022 तक रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या को हम 0 कर देंगे, यानी कि एक भी मौत नहीं होगी। इसी साल हमने वो त्रासदियां देखी उड़ीसा में, बालासोर में, आंध्र प्रदेश में, जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी, हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया, जो हालात रेल दुर्घटना से हमारे सामने आए। 14वां वादा किया था कि ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल डबल बाय 2022। लगभग 14% के आसपास हम लाके खड़ा करेंगे। 14% तो छोड़िए, पिछले 2 वित्तीय वर्षों से 5 या 6% पे हम मंडरा रहे हैं। आरबीआई का अपना खुद का टारगेट 6.5% पर है। 15वां वादा
कि 20 मेडिकल फ्री जोन्स बनाएंगे टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिज्म। सिर्फ वादा था, कोई डिलीवरी नहीं। 16वां वादा किया 100 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगी अंडर डेवलप्ड इलाके में, सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया। 17वां वादा था 10 नए इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जहां पे एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स लिव वर्क एंड प्ले की नीति के तहत काम कर पाएंगे, सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया। 18वां वादा मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों को हम शून्य पर लाकर खड़ा कर देंगे। 2022 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग विल बी इरेडिकेटेड। सच्चाई यह है कि मंत्री जी खुद अपने जवाब में सदन में बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 339 डेथ्स सेप्टिक टैंक्स में हुई और 2022 अकेले वर्ष में 66 रिपोर्टेड डेथ्स मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से हुई। न जाने कितनी अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं, उनका तो आंकड़ा ही नहीं है। 19वां वादा कि प्रपोर्शन ऑफ फॉर्मली स्किल्ड लेबर टू वर्कफोर्स हम बढ़ाकर 15% कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2023 खत्म होने को आ रहा है, 15% तो छोड़िए फॉर्मली स्किल्ड लेबर, हम आज 5% पे 5% पे मंडरा रहे हैं, जहां यूके में यह आंकड़ा 68%, जर्मनी में 75%, यूएस में 52%, जापान में 80% है। भारत देश 5% के आसपास खड़ा हुआ है। 20वां वादा किया था कि नई नौकरियां देंगे, 3 मिलियन जॉब्स इन हेल्थ केयर, 40 मिलियन जॉब्स इन टूरिज्म, 5 मिलियन जॉब्स इन माइंस एंड मिनरल्स। नौकरी की तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है, मिलने की बजाय नौकरियां जा रही हैं। 21वां वादा सिंगल प्लास्टिक यूज बैन हो जाएगा 2022 तक। नोटिफिकेशन लाकर बैन तो कर दिया, लागू कितना हुआ यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। 14 मिलियन टन प्लास्टिक इस साल भी हिंदुस्तान में यूज किया गया। 22वां वादा, बस समाप्त कर रहा हूं, इंपोर्ट जो हैं क्रूड ऑयल के और गैस के वो 10% से घटा दिए जाएंगे 2022 आते आते। 10% तो छोड़िए, क्रूड ऑयल की जो हमारा बिल है, इंपोर्ट बिल, उसके चलते वो डबल हो गया। गैस, क्रूड, सबकी इंपोर्ट्स भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। 23वां वादा, 23वां वादा कि नेशनल हाईवे की लेंथ को बढ़ाकर हम 2 लाख किलोमीटर कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2 लाख किलोमीटर तो छोड़िए, 30 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा बताता है कि हम लगभग 1,44,000 किलोमीटर के आसपास खड़े हैं, यानी कि इस वादे में भी फेल हो गए। 24वां वादा बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा आप, नो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग to reduce air pollution and PM 2.5 levels will come down by 50 by 2022, यानी कि 50 से नीचे आ जाएगा PM 2.5 का लेवल। सच्चाई यह है कि आज भी पूरा उत्तर भारत गैस चेंबर बना हुआ है, केवल दिल्ली चंडीगढ़ नहीं, लखनऊ वाराणसी में भी वायु प्रदूषण है। सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और 25वां और आखिरी वादा किया था कि वी विल अचीव अ डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:1400 एंड अ नर्स पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:1500। यह वादा पूरा करने में भी फेल रही। सच्चाई यह है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो या CHCs हो, इन सब में डॉक्टर्स, नर्सेज की शॉर्टेज है। बढ़ाना तो दूर, जो ज्यादा जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं उसमें भी आज फोर्स नहीं। और आखिरी में, अंत में बस इतना कहूंगा कि 25 वादे सरकार ने करे थे कि ये बड़े वादे हम 2022 तक पूरे करेंगे। इन 25 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब क्या मुंह दिखाकर ये 2024 में लोगों से वोट डालने जाएंगे? कोई साधारण आदमी अगर वादा कर वादा खिलाफी करता है तो उस पे कार्रवाई होती है, उस पे पर्चा दर्ज हो जाता है, 420 की धाराएं लग जाती हैं। जब सरकार वादा कर मुकरती है तो जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री अमर पटनायक जी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, ma'am. Ma'am, I would like to first of all congratulate the government and the Honorable Finance Minister, she's not here, for the kind of direction that has come to the economy, which is reflected in the last quarterly result of the GDP. 7.6% in the July-September quarter of financial year 24, beating all expectations by all the rating agencies. I'm also happy by the fact that under the leadership of our Chief Minister Naveen Patnaik, our state also has been beating the national growth rate consistently for the last 10 years. The trajectory of growth that has been set in motion by the government during the last 5 or 6 budget
particular emphasis on capital expenditure, I think is in the right direction. The policy push has been reflected in the consistent economic growth. Now, I would like to draw attention, ma'am, to a few of the global economies, how they have fared during this period, because that would set the context for how Indian economy has performed during this period. 2022 GDP growth figures, India 7.2%, IMF, I'm quoting the IMF figures, China 3%, UK 4.1%, US 2.1%, Germany 1.8%, IMF's projected GDP growth rate for India 2023 is 6.3%. If we go by what has happened today, I think we are going in the right direction, would probably be beating that particular projection. Now, I have heard from the opposition benches here, from many of my colleagues have said about a number of things that India should have been doing, India should have been achieving. But for all that, we need the GDP to grow, and that is what is happening. So I think the thrust of this current debate that we are having under this short duration discussion is, where are we as far as the Indian economy is concerned? I think we are in good wicket, on a strong wicket. But having said so, I would like to also say, I would like to state that if we look into the granular details of what has spurred this growth and what has to be done further, I think it is important, because what I'm going to say now is that we are in a very nice position to bring in structural changes in the economy. We are going in that direction. Over-reliance on private consumption expenditure to shift towards an investment-oriented growth strategy is, I think, a step in the right direction. But for that, the policy push has to be stable and consistent. Now, let me look at the real gross value added. Real gross value added, because that indicates the actual value addition that has taken place in the economy. Now, that is the latest figures I am taking. Here there are some concerns, and therefore my suggestion to the Treasury benches would be just to somehow ensure that these fault lines are addressed. Agriculture, forestry and fishing. If we look at the figures from 2019 onwards, ma'am, it has consistently decreased. Agriculture, forestry, fishing, it has consistently declined. It has come to 1.22% in 2023. Now, this is a cause of worry, because food security, whatever said and done, is, I think, one of the most important requirements of a growing economy and a growing population. Agriculture, allied sectors has seen this steady decline from 4.3%. It grew during the pandemic years, which made us survive the pandemic, to 1.2%. And what it calls for is investment in agriculture, and therefore the government came with the Agriculture Infrastructure Fund. However, against a projection of 1 lakh crore spending in agriculture sector under this particular scheme, only 26,000 crores have been sanctioned and 21,000 has been spent. I think a lot is to be done in the rural sector. The Swaminathan Committee report, which has been talked about for increasing the income of the farmers, fixing the minimum support price, is yet to be done based on the C2, that is the composite price, which has been the consistent demand of our party, Biju Janata Dal, our Chief Minister Naveen Patnaik, and we have been saying it in all fora. Now, that has not happened. That has to happen. The deceleration in the agriculture sector translates into some stress in the rural sector. And this has to be recognized, because rural economy has to go up in case we have to maintain this growth momentum, and the structural shift remains where it is, and it doesn't frequently change its position year on year. Now, if we come to the services, the growth rate in the services has come down to 5.8%. And this is a deceleration. Previously, our economy was heavily dependent on services. But if the services come down, and particularly trade, hotels, transport, communication, broadcasting services, it has just grown by 4%. Now, these are the sectors which provide jobs. Now, unless we can grow in these sectors by consistent policy efforts, by budgetary allocation, by increasing private investment in these sectors, jobs will not be created, and the unemployment problem will consistently haunt us. And therefore, I think this is something which the government has to think about. The other point that I wanted to talk about is on the social sector, ma'am. Ma'am, in the social sector, the last economic survey said that
out-of-pocket expenses are 48%. Now, this has to decrease, and therefore, expenditure on health has to increase. Now, this has not happened. This has to be consistently made, given the fact that our economy is growing at a healthy rate. So, Madam, the growth of the economy, Indian economy, depends on the growth of the state economies. Now, the growth of the state economies can increase only when the central allocation by way of devolution of funds increases. What we have seen is that this has consistently decreased and currently at about 30%, which I think is not doing well, good to the economic situation in the states. We have to ensure that the regional imbalance that exists between several states in terms of attracting foreign investment because of the infrastructure which is already there. Now, that has to be addressed by either declaring special focus state to some of the states like Orissa or Andhra Pradesh, or making an infra push in these sectors which will actually lift them to a level in which foreign direct investment can also come into these sectors. Ma'am, there is a point that I wanted to make relating to tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio had shown a good trend recently. The GST collection has increased, which basically means that formalization of the economy is taking place. But at the same time, 90% of the people are still employed in informal economy. Now, this is a contradiction which I think the government has to address at some point of time, because unless this is addressed, a structural problem may still remain in the economy even as we are growing in GDP terms. Ma'am, the tax to GDP ratio at 11.1% is at par with 2020-23 revised estimates, but it is less than the average of many emerging economies, including the OECD economies, where it is 33%. So we have to bring this structural change in our economy in terms of revenue collection, tax as a percentage of GDP. The last point, ma'am, I want to make is relating to private sector investment. The investment that has already happened, which is spurring this economic growth, which our economic analysts are also saying is basically backed by government's emphasis on capital expenditure, which is welcome. But this capital expenditure has to be backed by private sector investment from the private sector in the economy. The household sector's investment in the economy is already happening, but the private sector's investment is not happening. This is a cause for worry, and for that, I think several more policy push have to be made, because this would be another source in which jobs can be created, employment opportunities can be created, and unemployment can be addressed. Lastly, madam, there was a talk about female labor force participation. Ma'am, last point, female labor force participation. There was a discussion as to the stark reality of our female labor force participation being very low compared to other countries. But ma'am, just a point that actually there is an increase in female labor force participation thanks to the government by 37% in 2023. Several such measures will have to be taken to bring it to a level in which we can be comparable to other countries. So overall, in short, ma'am, I would like to say that economy is in good hands, but there are fault lines. These fault lines have to be addressed. And if that happens, then the country's growth trajectory will be more inclusive, more sustainable, and it will benefit all sections of society. Thank you so much, ma'am. Thank you. Manya Sansad, Shri Ayodhya Rami Reddy Alaji. At the outset, I would like to thank the Honorable Vice Chairman, ma'am, for giving me the opportunity to speak on the economic situation prevailing in the country. Ma'am, I would like to emphatically state that 20th century belonged to China, but 21st century belongs to India. India has emerged as one of the fastest growing economies in the world, despite challenges in the global environment. Though challenges include the rise in geopolitical tensions, disruptions of supply chains, and a global tightening of monetary policies and inflationary pressures. The economy is projected to grow at 6.5 to 7% rate in the fiscal year 2024.
but the country's economy expanded 7.6% in July-September quarter, surpassing the projections of 6.5% growth estimate by RBI. India's growth rate is almost twice the average of emerging market economies. What is really working for us? India's economic progression is being powered by the government's emphasis on public infrastructure investment, capital expenditure, and increased bank rate growth. Government spending has been up by 12.4%. Manufacturing and construction sectors have also seen growth with a rise in demand for new projects. The biggest boost in the growth came from services sector, which grew at 10.3% in the first quarter, up from 6.9% in the previous quarter. This can be attributed to strong growth in the financial, agri, real estate, and other services sectors as well. As an emerging economy, India has been able to control its inflation, while many advanced economies are dealing with severe inflation and have not yet been able to stabilize these economies. According to IMF estimates, the Indian economy will emerge as the world's third largest economy by 2027, surpassing Japan and Germany's GDP, as we are going to cross $5 trillion. Madam, India's digital infrastructure is the best in the world. Our digital infrastructure development has helped in faster delivery of financial services and helped make a positive impact on financial inclusion. According to the G20 policy document prepared by the World Bank, India has achieved a remarkable 80% financial inclusion rate in just 6 years, a feat that would have taken nearly 5 decades without a digital public infrastructure approach. Andhra Pradesh government, under the able and dynamic leadership of Mr. Jagan Mohan Reddy, has used this digital infrastructure to transform the state to next level. Madam, I would like to say what are all the developmental statistics that Andhra Pradesh has given in the economic situation of our country. Madam, AP records 50% GSDP growth in 4 years, jumping from 16 to 4. March 2019, Andhra Pradesh rank in terms of growth rate was 16 out of 28 states with a GSDP of 8.7 lakh crore. However, as per the latest RBI report, 2022-23, Andhra Pradesh jumped to rank 4th in terms of GSDP growth in the country with a GSDP of 13.17 lakh crore. The state recorded 50% GSDP growth in the last 4 years. The second point, significant uptick in per capita income. AP moves from spot 17 to 9. In March 2019, Andhra Pradesh ranked 17th in the country with a per capita income of 1.5 lakh. In just 4.5 years of CM Jagan-led government, the per capita income has increased to 2.1 lakh rupees and currently has acquired 9th spot among the other states. These are all RBI's handbook statistics, madam. The third one, the debt GDP, the debt growth rate down by 111%, from 169% in 2014 to 58% in 2023. Under the Chandrababu Naidu's government in 2014, the debt growth rate of state was high as 169%. Sir, name may not be However, mentioned. after gaining power, Mr. Jagan Mohan Reddy not only took measures to elevate the state's economic growth, but also ensured that the debt growth slid down. Madam, after 4.5 years, the debt growth rate has drastically come down from 110% to 58%. This is also as per the records available. The record generation of government jobs. Madam, till during 2014 to 2019, there were only 34,000 government jobs were filled. But in the last 4.5 years of YSRCP government,
4.93 lakh government jobs Sir, please are refrain created. from mentioning names, sir. Please. Madam, ascending agricultural growth from second last, this is all contributed to the nation's economy, my friend. My friend, you have to understand this. Ascending agricultural growth from second last to number 7 in India. In March 2019, AP growth, agriculture sector growth was ranked 27th in the country with a negative growth rate of 6.5%. However, in a significant change, that state has ascended to 7th position in the last 4.5 years. AP's agricultural growth rate now has been recorded as positive 5.5%. This is again handbook statistics of RBI, madam. 3 times growth in industrial sector performance. During the 2019, the industrial growth rate was a meager 3.2%. But today, under the CM Jagan's government, the industrial growth rate has increased to 10.59%. Again, this is from RBI statistics. AP tops consecutively for 2 years in ease of doing business. This is also again from Ministry of Commerce and Industry, Government of India source. Record 5 times growth in MSME in the last 4 years. During 2019, when my CM took over, it was only 37,956 MSMEs. But in the last 4.5 years, it has gone up to 1.88 lakh MSMEs. This is also, again the statistics that are available on record. Industrial stalwarts always look to Andhra Pradesh. Madam, I would like to tell, Andhra Pradesh received the highest ever investment of 13.5 lakh crore during a single global investor summit held in March 2023. All the top industrialists have invested to the huge extent and committed. These are all, again, as per the statistics available. Madam, I think my colleague has to understand. Thank you, sir. Ravindra, please. Then finally, ma'am, revolution in school infrastructure. Madam, in the last 4 years, 7,112 crores has been spent in government schools. More than, madam, introduction of English medium is one of the best governance and best input that has come from Andhra Pradesh government. 46% exponential rise in healthcare infrastructure. It has increased from 28,000 to 41,000 crores. The CM Jagan government has developed more than 10,000 YSR village health clinics, which were never looked at it. Arogya Suraksha programs and also free medical camps, whatnot. There is a huge, massive infrastructure boost. More than 4 ports, 10 fishing harbors, 2 airports, 17 medical colleges, 3 industrial corridors with 5 nodes, 10,078 Rait Bharosa Kendras, 15,000 Gram Sachivalayams, 10,000 YSR health clinics, and all over 31 lakh house pattas to poor and other. 22 lakh houses are under construction. Madam, I have few suggestions for Government of India. To evolve into a $5 trillion economy, India must focus on several key areas, especially in new and emerging fields. Digital infrastructure and technology certainly need to be focused. Renewable energy need to be focused. Financial sector reforms need to be focused. International trade and relations should be focused. Research and development initiatives should be focused. Judicial sector reforms must be focused. Bureaucracy reforms should be focused. Madam, I must tell you one thing. Under Prime Minister Modi's governance, this country has seen a lot of safety and security. There is a lot of discipline that has come in the system. I must tell you, starting from the shareholders to the investors to the industries, banking system, all the people that are there in the system understand the importance of governance, and everybody is following a disciplined route.
Madam, I would like to congratulate the Honorable Prime Minister and the Finance Minister steering our country during huge global uncertainties in an effective manner while bringing the maximum benefits to the Indian economy through all the diplomatic outreach initiatives. Thank you very much, Madam. Thank you, Madam. माननीय सांसद श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। चेयरपर्सन, थैंक यू। मैं माननीय चेयरमैन का शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होने का हमें मौका दिया। ये विपक्ष की मांग रही है कि अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये परमिशन दी है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। मैम, लास्ट फ्यू स्पीकर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि हमने सबकी फैक्ट फ्री डिफेंस सुना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सांसदों की तरफ से। क्या हो गया माइक को? आवाज़ कम है। मैम, यू कैन हियर मी? Excuse me for a second, Dr. John Britters, I'm sorry. After her, please. Thank you. Ma'am, add 30 seconds to this disruption. So, 5. Oh, please stop. So, ma'am, what I want to say is, मुझे पूरा समय मिला सबकी बातें सुनने का, और ख़ास करके कुछ सांसदों का जहाँ कह रहे थे मनरेगा की डिमांड आधी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आधे हो चुके हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनके आंकड़े सही हैं तो मनरेगा में जो अखबार हमें बताते हैं और जो रिपोर्ट आती है, मनरेगा की भारी मांग क्यों हो गई है, दुगनी क्यों हो गई है? साथ ही साथ रूरल मिनिस्ट्री की मांग है, 60,000 करोड़ का बजट था मनरेगा का। इस वाले आने वाले बजट की उनकी मांग है कि 1.1 लाख करोड़ मनरेगा को बजट एलोकेट करना चाहिए। ये किस वजह से हो रहा है अगर मनरेगा की डिमांड आधी हो गई है तो? दूसरी बात मेरे समझ में नहीं आई जब एक माननीय सांसद कह रहे थे, जिनकी आदत है टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से जनता को किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनको चुनाव में भारी बहुमत मिल रहा है। तो अगर उनको किसी तरीके का दुख नहीं है इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट आधा हो गया है, तो मैं पूछना चाहूँगी 80 करोड़ देश की जनता को जो राशन मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? या तो उनके पास रोज़गार है, और अगर रोज़गार है तो उनको ये 80 करोड़ लोगों को ये राशन की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? जीडीपी की बात हो रही थी, और एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि आरबीआई के आंकड़े ब्रीच नहीं हुए हैं इन्फ्लेशन के। मैं उनको याद दिला दूं, जैन 2023 में 6.52% इन्फ्लेशन था, फेब 2023 में 6.44% था, जैन 2022 में 6.01% था, फेब 2022 में 6.07% था, मार्च 2022 में 6.95% था, और अप्रैल में 7.79% था। ये इन्फ्लेशन जो ब्रीच किया है आरबीआई के आंकड़ों का 6% का। बार बार जीडीपी की बात हो रही है। मैं जीडीपी से ज़्यादा मैं पर कैपिटा इनकम में ध्यान देना चाहूँगी। एक माननीय सांसद ने कहा कि मैं अगल बगल की राज्यों की देशों की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन से हमारे देश की कंपैरिजन करना चाहूँगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पर कैपिटा इनकम उन देशों के कंपैरिजन में इंडिया के पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दें। यूएसए है पर एनम इनकम 2022 के आंकड़े मैम 63,41,117, चाइना 10,51,610, इंडिया कहाँ पे है 1,98,287। पिछले 2014 से जो पर कैपिटा इनकम देश के देशवासियों की बढ़ी है वो करीब 35% बढ़ी है। मैं उनसे ये क्रेडिट छीनना नहीं चाहूँगी, पर जो उनकी महंगाई बढ़ी है वो 123% बढ़ी है। तो आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया जो कहा जाता था वो आज इन्होंने पूरा कर दिया है। अगर आप कहेंगे कि मैं दाल चावल सबका दाम भी दूं कितना बड़ा है, तो वो जिस आंकड़ों पे पर कैपिटा इनकम बढ़ा है उससे ज़्यादा ही बढ़ा है। मैं 2 मिनट लूँगी, बस 1 मिनट और। आप भी महिला, मैं भी महिला, पहली बार। जो रुपी डेप्रिसिएशन की बात हुई थी, मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे प्रधानमंत्री जी, वो रुपी के गिरने पे कितना अफसोस जताया करते थे। कितने उनके भाषण हैं
कहते थे पाकिस्तान की रुपी स्ट्रॉन्गर हो रहा है, बाकी देशों का करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारे देश का ही क्यों वीक हो रहा है। और आज दिल दुखी होता है जब पढ़ता है कि हम लोग हिस्टोरिकल लो पे जा रहे हैं। इंडियन रुपी हिस्टोरिकल लो पे है अगेंस्ट द डॉलर। वो किसकी नीतियों की वजह से हुआ है वो देश, आई एम श्योर माननीय वित्त मंत्री हमें बताएंगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और जब ये पढ़ते हैं पुअरेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया, मैम बस एक लास्ट मिनट, वन लास्ट मिनट मैम प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े मैं उस पे जाना, मैम प्लीज वन लास्ट मिनट, वन लास्ट मिनट। लास्ट में मैम लोन राइट ऑफ्स के बारे में कहना चाहूँगी। बहुत बार ये बात हुई है कि गरीबों का ध्यान दिया है, गरीबों का उत्थान किया है। 10.6 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ हुआ है, जिसमें से 50% जो लोन राइट ऑफ हुआ है उन कैपिटलिस्ट का हुआ है जिनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप जब गरीबी की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सही मायने में देश में सबका साथ और सबका विकास लाएं। आपकी आभारी हूं मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जॉन ब्रिटस, माननीय सांसद जी। Thank you very much, madam. Madam, I am a strong feminist and I need to get 2 or 3 minutes more from you, madam. Madam, see, a miracle has happened. After the speeches of Rajesh Sinha and others, when I was coming from South Avenue, there is some changes that has happened to the boat club. Instead of water, it is full of honey and milk. ये पानी शहद हो गया और दूध हो गया. After 2014, this country has drastically changed, madam. You know that, no? How it has changed. All the indices have been doled out here, and I will not refer to you, madam. But I will specifically come to certain concerns of my state. Madam, the other day I had asked a question to the Honorable Finance Minister as to the borrowing limits of the states. I got an answer from the minister. She said that we are strict on borrowing limits because the 15th Finance Commission has given a recommendation. And I asked her, what is the recommendation? It is like this. Governments at all tiers may observe strict discipline by resisting any further additions to the stock of off-budget transactions. Fine, madam. Perfectly okay. Is not union government a government? Are they not part of the governments which have been referred to by the 15th Finance Commission? They want all the state governments to shed the borrowing of the PSUs or SPVs. When it comes to the central government, just see the National Highway Authority of India. I asked a question. You know what is the loan debt of NHA? Madam, you would be surprised. 3.4 lakh crore. There are other agencies also. They want to discipline state governments. What is the total debt of the union government, ma'am? 157 lakh crore. A humongous figure. They are trying to blame the state governments, sir. Madam, now I am coming from Kerala. See, the Kerala's social indices are at par with the Western countries. What is this economy, madam? Economy is for the society, for the people. Is it just because you want to stack some cash in your house, is that economy? No, the welfare of the people. The average lifespan of a Malayali is more than 12 years of that state from Rajesh Sinha or other states. What is the meaning of that? We live more than those people who are in the north. Madam, I will just come to another topic. Madam, I want your protection. It's a very serious matter. Now, the point is that we are being penalized. You know what is the new slogan? The Prime Minister was harping about cooperative federalism. It's not cooperative federalism, madam. This is crony federalism. You know why? See, 18% of the population, South India, we contribute 35% of the GDP.
We are being penalized for the performance. You mop up so much of resources through surcharges, 7 lakh crore in a year, then you bring centrally sponsored scheme, which cannot be implemented in state like Kerala because we have crossed the threshold. You want us to open schools. We have already schools there. Madam, please give me. You have been liberal to everybody. Now what is happening? Now there is a strange phenomena. Somebody was talking about selfie corners in higher education institute. Arey Modi saab to sabhi jagah pe yaar. You want to add everywhere? Now one more thing, madam. They are contributing 1/5 for the housing scheme, whereas 3/4 is being contributed by state of Kerala. They want to brand the houses which are built. Entire credibility of this government rests with the fact that the slogan, you need to have prosperous state. In the chairperson, मैं भारत के आर्थिक व्यवस्था संबंधी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमें ये ध्यान रहे कि हमारे अतीत थे तो आप वर्तमान है तो भविष्य में भी रहेंगे। हमारे आर्थिक व्यवस्था अपना हम अतीत में देखें, एक नज़र डाले तो देखिए हमारे देश कुबेर का था, कुबेर धन, और देखे तो स्वर्णपुर। हेलो मैडम, हमारे देश का नाम था रत्नपीठ, स्वर्णपीठ। तो ये कुछ दिन का बाद 14 से पहले यार की तो देखा जाए हमारे आर्थिक व्यवस्थापना एकदम लाचार हो गई थी। भारत के आर्थिक व्यवस्थापना एकदम लाचार हो गई थी। तो हमारे आर्थिक भंडार को हमने हमारे सोने को गिरवी रखना पड़ता था। इतना आमागा आप देखे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब ये भारत को संभाला तब से देखे तो आज तक अभी तक 2022 से 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.2% थी और ये वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था की स्थिति। भारतीय व्यवस्था को दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहा जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से भारत की एक उल्लेखनीय आर्थिक प्रक्षेपक की मतलब ये आर्थिक व्यवस्थापना का जो नीति है ये दुनिया की नज़र हमारे आर्थिक व्यवस्थापना का सराहनीय करते हैं। तो मैडम मैं कहना चाहता हूँ जे हमारे अभी जो आर्थिक व्यवस्थापना है इसको कुछ इलाका में डेवलप की कमी है। देखिए ये जो डेवलप आर्थिक व्यवस्थापना ग्रोथ हुआ है लेकिन हमारे नॉर्थ बंगाल, बिहार की उत्तर पूर्वी इलाका, आसाम का इलाका में, नॉर्थ ईस्ट इलाका में एकदम नैरो है। तो हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे उधर का आर्थिक व्यवस्थापना दुरुस्त हो। अभी बोलने दीजिए। फिर आर्थिक व्यवस्थापना दुरुस्त हो, इसीलिए गवर्नमेंट से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे उत्तर पूर्व भारत को, नॉर्थ ईस्ट साइड को डेवलप किया जाए। तो हमारे जो मुद्दा है देखिए ये दुनिया का अभी हम चाहते हैं कि हमारे ये लक्ष्य पूरी करे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक मुद्दा का नीति जो जीडीपी है सर्वश्रेष्ठ स्थान में पहुंच जाए।
मैडम मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री विवेक तनखा। मेरा ओ अब मैं बोल लूँ, उसके बाद बोल लीजिएगा। जो उन्होंने बोला कि जब ये हमारे ये हो गए थे, जब सोना गिरवी रख गया था, उसके बाद फिर मोदी जी ने आकर उसको संभाला। अरे उसके बाद तो नरसिम्हा राव जो आए थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था संभाली थी। 2005 का उन्होंने सही बताया कि मनमोहन सिंह जी में 7 से ऊपर जीडीपी थी, लेकिन आज वो जीडीपी नहीं है। तो फैक्ट्स को जो है सुधार के वक्त बोलें, यही मेरा अनुरोध है। ठीक है। माननीय श्री विवेक तनखा। टाइम शुरू से स्टार्ट करें। मैं बहुत देर से सभी मेंबर्स को बहुत सीरियसली सुन रहा था और सुन रहा था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से इकोनॉमी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की बात की, लोगों ने जीडीपी की बात की, ग्रोथ की बात की, एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, सबकी बात की। बट मैं पहली चीज़ ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं जब इकोनॉमी को देखता हूँ तो मैं अपने शहर से देखता हूँ। मेरे शहर की व्यवस्था क्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, जबलपुर में रहता था। वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, करीब 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जहाँ 1 लाख से ऊपर लोग काम करते थे। और ये 50-60 साल की व्यवस्था है। आई एम श्योर बहुत सारे सांसद यहाँ के जब जबलपुर आए होंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उन्होंने देखी होंगी। समस्या ये है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ 1-1.5 लाख लोग काम करते थे, आज मुश्किल से 10,000 लोग काम करते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेल। इकोनॉमी तब अच्छा करती है जब लोगों को नौकरी मिलती है, खर्चे, इन्फ्लेशन कम रहता है, चीज़ें सस्ती होती हैं, आराम से ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े फिगर्स मेरे पास भी हैं। बट मैं जब देखता हूँ कि जब एंसिलरीज बंद पड़ी हैं, आप कहते हो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हब है? एक डिजिटल हब है खाली, थोड़ा सा। जो डिजिटल मार्केट एक नया क्रिएट हुआ है, जो आईटी का एक मार्केट क्रिएट हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें नोएडा आ गई हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में हुआ करती थी या बाहर और देशों में होती थी, वो यहाँ थोड़ी शिफ्ट हुई है। जो हैवी इंजीनियरिंग वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो आज भी नहीं आई है यहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं मोदी जी को सुनता हूँ या मंत्रियों को सुनता हूँ और सब बात कर, कोई इनमें से एजुकेशन की बात कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, ग्रोथ की बात हार्डली करते हैं, मिडिल क्लास के बारे में हमको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते, एक इंक्लूसिवनेस जो होनी चाहिए देश में उसके बारे में चुप रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताते, और जो बताते हैं वो बहुत थोड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि जब जॉब्स हैं वैनिश, जॉब जब चली गई हैं, तो हमको आजकल क्या शब्द मिलते हैं? घमंडिया, अमृतकाल। अब आप पूरे विपक्ष को घमंडिया बोलते रहो, बट उससे चीज़ें तो नहीं बदलने वाली हैं। मेरा कहना है इस देश में लास्ट 9 साल से खाली जुमला और एम्प्टी प्रॉमिसेस दिए गए हैं। और मुझे आज याद आ रहा है, एक अपने सनी देओल साहब लोकसभा के मेंबर भी हैं, एक मूवी थी जिसमें वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। तो इसी तरह मैं मोदी जी और बीजेपी से कहना चाहता हूँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, मगर हमको विकास नहीं मिला। तो विकास एक्चुअली नहीं मिला, आपने हमको तारीखें दी, आपने 16 दी, 17 दी, 18 दी, 19 दी, 20 दी, 22 दी, बट वो विकास कहाँ है जिस विकास की आप बात करते हो? और मैं आगे बताना चाहता हूँ, मेरे पास 6 इंडेक्सेस होते हैं, विकास के 6 इंडेक्सेस होते हैं। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज जब रियल वेजेस, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो होता है, जो फार्मर होता है, उसके वेजेस में क्या इजाफा हुआ,
सितंबर 2017 से 22 में it has declined by 0.9%. Between 2017 and 2021, regular, मैडम मेरे तो 7-8 मिनट थे. टाइम हो गया 4 मिनट का. अरे मेरे को 7-8 मिनट थे मैडम अभी. तो ना वो लिखे. और regular workers have declined from 0.7% to 1.3%. मैं इसी तरह बताना चाहता हूँ, कुकिंग गैस 100 रुपए की थी 200 हो गई पर लीटर, मिल्क 35 था 65 हो गया, पल्सेस 75 थे 180 हो गए, फ्लावर आटा 20 रुपए पर केजी था 45 हो गया, शुगर 35 था 55 हो गया, पेट्रोल 70 था 105 हो गया. अब एम्प्लॉयमेंट की बात करिए. एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन जो है इस unemployment rate is 42%. Labor force participation rate has fallen to 40% as already from an already low 47%. In 5 years, while the total working population has gone up by 12 crores, the number of people with jobs has gone down to 80 lakhs. इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ एग्रीकल्चर का फेलियर. मैं शॉर्ट में कर देता हूँ. रूपी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है. फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं रुपया गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हुआ. हमारा कहना है रुपया इज टुडे सीन एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमी. तो मेरा ये कहना है वेदर इनइक्वालिटी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, रूपी का डिक्लाइन है, फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, आपकी ग्रोथ हुई कहाँ है? ये ग्रोथ तो मुझे कहीं दिखती भी नहीं है. मुझे खाली ये दिखता है कि आप ऑपोजिशन के अगेंस्ट फुल टिरेड आप लोग लॉन्च करते हैं, ऑपोजिशन को एक बैड नेम देते हैं, कभी कह देते हैं ये अमृतकाल है, कभी कह देते हैं ये घमंडिया है. इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर आप चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ हो, इट हैज टू बी ऑन दी 7 इंडेक्सेस जो मैं बोल रहा था. इट हैज टू बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ. इट हैज टू बी ग्रोथ ऑफ इट्स वर्कर्स, इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, इट्स टाउन्स, इट्स वर्कर्स एंड इट्स यूथ, इट्स वुमेन, इट्स ST, SC, OBC, एवरीबडी. थैंक यू. जय हिंद. धन्यवाद. माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास 9 मिनट. Madam, we are discussing the state of economy in India, but anyone listening to this debate since yesterday will realize that when it comes to facts and figures and insights, members of the opposition parties are giving clear arguments to make a strong case. On the other hand, the BJP is having a competition of what, madam? As to how many times they can mention the name of the Prime Minister, Honorable Prime Minister. Well, of course, we don't have any problem regarding that. But I would like to know, why don't they give us facts and figures? The previous speakers from my party, the previous 3 speakers, of course, have made one common point. What are the points? Why is the wealth that is created not being equally distributed? Where? Firstly, equally among all the people. Secondly, among the states, irrespective of their political ideologies. Now, as you know, let me make a charge which I can substantiate with data. The non-BJP states like Bengal, Tamil Nadu, and the Congress-run states are deprived. The unspoken catchline seems to be, support us politically and we will raise funds. Support us politically and we will not send the CBI and ED behind you. Madam, I will give you one example about MG and RGA. 5 points I will raise about MG and RGA. Firstly, madam, it's an act of parliament, as we all know. It is a right and not a gift, depending on the whims and fancies of the central government. Secondly, as per the act, the payment to a worker who has worked under this scheme is to be made within 15 days. So if 100 people have worked on a scheme and if there are any discrepancies arising out of it, if 2 of them are found guilty, I would like to know why are the rest 98% or 98 people deprived. This is most unfortunate and most undesirable, but this is what is being done. The budget of the MG and RGA has been cut by about 30% with respect to last year. But we are not surprised, as in 2014, on the floor of this parliament, the Honorable PM had called it Gadda Khodne Ka scheme, most unfortunately. Gadda Khodne Ka scheme. Now, 4th point is, madam,
MGNRGA mandates nation over are falling, but the government, the ruling party, the BJPs are celebrating it. Today, one of their MPs have called this an indicator of development. This is their way of looking at the economy, but our approach is different. Speaking of the fifth point, speaking about job cards, about 7,40,000 job cards have been found to be fake in Uttar Pradesh. That means of the total figures, about half Uttar Pradesh account for. Bengal had about 5,000 fake job cards. I would like to know, have the funds to Uttar Pradesh being stopped? I'm sure the answer is known to all. Now, let me read from the BJP manifesto of 2014. I'm mentioning about it. They are spoken of doubling farmers' incomes. Did it happen in 2019? No. Again, did it happen in 2023? No. At current growth estimates, the farmers' incomes will not double before 2030. In Bengal, in 2011, a promise was made by the Honorable Chief Minister. Most interestingly, it was about doubling farmers' income, and I take pride, as I come from Bengal, in mentioning that as of today, it is not doubled, but it is increased threefold as in the current date. Now, madam, let me come to public sector undertakings, the PSUs. Madam, we have withstood the shock and trauma of demonetization. But how many of us have heard of monetization? This is the instrument of the Niti Aayog to sell out the people's assets, as the name reflects, public sector undertakings. It belongs to the public. It is the asset of the public. And the government is hell-bent upon selling it. Madam, it's like selling the family jewelry. As you can name it, Rail, Air India, BHEL, BSNL, LIC, and the list is unending. These were created over decades, but now we want to strip the nation of these assets. I proudly belong to the scheduled caste community, and every time this happens, I'm hurt, and hurt dearly. As every time a PSU is sold, a young SC boy or girl is deprived of their right to secure a job. And worse still, there is also unemployment. There is also in employment, contractual engaging is taking the front seat, where you don't have any, you're not going for reservations. That is a very big concern. And moreover, whenever a PSU is sold, often these people are rendered jobless, and it creates unending miseries for the family. Madam, now, in understanding the union condition of the current economy, we have to understand the condition of the state economies. So it is very important to discuss cooperative federalism. Our present Honorable Prime Minister and Home Ministers were both Chief Ministers and Home Ministers of a state. So they should understand better what the problem of the states are. But most unfortunately, when they are in Delhi, they have also adopted the zamindari culture, as if the money is for distribution at their will. But it is, as we all know, is to be done as per constitutional guidelines, which are flouted day in and day out. Madam, I appeal to you that next week we should have a short duration discussion on the issue of cooperative federalism. Madam, if you notice, the House is running so smoothly and it's so good for all of us. Next week also, the opposition should get one short duration discussion on one calling attention, wherein they can express their concern as opposition, and they can at least speak out of the pain the states are in. They can make their points so that the states are to benefit. But also, there is a flip side to it. The BJP will also benefit from this, as even if their speeches remain devoid of facts, figures, or any reasoning, at least their speeches will have multiple mentions of the name of the Honorable PM. To summarize, I would say, the way the government is conducting itself, in a nutshell, we can say
Their catchline is, the rich should get richer and the poor should get poorer. Now, the way the present government is exploiting the financial interests of the state, and that is most improbably much higher than the colonial rule. So I expect there will be a change of stance. We would think much more about cooperative federalism and act in that direction for the benefit of one and all and the nation as a whole. Thank you, Madam. धन्यवाद। माननीय श्रीमती सुलता देव। जय जगन्नाथ। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैडम, मुझे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। 7 मिनट है। 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक तो हम पहुँच ही गए। फिर देखा जाए तो कितने मुश्किल से भी पहुँचे। रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोविड के चलते आज हम यहाँ तक पहुँच गए। मेरे पूर्वज सारे वक्ता आंकड़े दिए, मुद्रास्फीति का और जीडीपी का, ग्रोथ का, सबका। वो आंकड़ा मैं नहीं देना चाहूँगी। मैं एक महिला हूँ। मैं जो गाँव में और जो रूरल एरिया में जो महिला बिलोंग्स करती है, सारे ये भारतवर्ष में मैं शायद उनके तरफ से जैसे मुझे लगता है वही बोलना चाहूँगी जो दिल से बोलूँगी। ये बात है कि मैं एक महिला हूँ। पहले मैं किचन से बात करूँगी, क्योंकि जीडीपी कितना भी बढ़ जाए, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगी कि हमारा देश बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। मगर मैं फिर भी वही आऊँगी किचन में। मैं क्योंकि एक महिला हूँ, हम कहीं भी जाए मगर किचन में अगर एक गरीब की थाली में सब चीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा ही लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ही खलती है। आज सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो महंगाई के चलते गरीब की थाली में बहुत सारे चीज़ बहुत मुश्किल से आ रहा है। जिस दिन गरीब की थाली भरा हो जाएगा ना, उस दिन पूरा देश हंसेगा, उस दिन जीडीपी भी ग्रोथ होगा, जितना भी ग्रोथ होगा। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एक पॉन्ड है जिसमें बड़ी मछली भी रहे और छोटी मछली भी रहे। ऐसा ना हो कि बड़ी मछली सारे छोटी मछलियों को निगल ले। ऐसा अर्थव्यवस्था होना चाहिए जैसे कॉरपोरेट सेक्टर भी ग्रो करे और छोटे से छोटे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक भी बढ़े और माइक्रो इकोनॉमिक भी बढ़े। जैसे साधारण लोगों के पास हाथ में पैसा जाए तो ये पैसा देश में रहेगा। अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट आती है, ये बहुत अच्छी बात है। जिस बड़े से बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास में जो पैसा रहेगा ना, वो ज़्यादातर पैसा विदेश में जाएगा। हम लोग हमारे देश के पैसा छोटे से छोटे जो लोग काम करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा करें। खासकर मैं एक बात बोलूँगी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात आती है तो मैं महिलाओं को भी साथ में लूँगी, क्योंकि हमारे आबादी 50 से अधिक % महिला है और महिला एम्प्लॉयमेंट, महिला वर्कर को कैसे काम करें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। जब आंकड़ा देता है कि 22% सिर्फ महिला है तो कैसे बढ़ाया जाए। मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगी मेरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो 7 लाख एसएचजी बना के 70 लाख महिलाओं को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और उनके घर देखा जाए तो महिला के पास अगर कुछ पैसा हो तो वो बच्चे को अच्छे से रख सकती है, घर को अच्छे से संभाल सकती है। वो एसएचजी आज एसएमई में परिवर्तन हो चुका है। आज अगर देखा जाए चूल्हा चौके चलाने वाली महिला हमारे यहाँ पर लैपटॉप चलाती है और देखा जाए तो फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बिजनेस भी करती है, एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी है। इसके लिए मेरा गवर्नमेंट ने उनको गठन के यही सब सारथी बन गई महिला। मैं चाहती हूँ कि महिला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाए, महिला लोगों के लिए ज़्यादा स्कोप क्रिएट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे में और एक बात है, उड़ीसा
जैसे मनरेगा के बारे में बात हो रहा था, मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी लेना चाहिए। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, आपको भी मालूम है, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत होता है, डिजास्टर बहुत होता है। हम लोग हमेशा बार बार मांग करते हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए, स्पेशल अगर नहीं हो सके तो स्पेशल फोकस स्टेट का स्टेटस दीजिए, जिससे सारे राज्यों का एक ही साथ में विकास हो। अगर देखा जाए तो जब माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा का शासन भार लिए थे, तभी 11,108 करोड़ का बजट था। अभी हमारे मुख्यमंत्री का बजट, हमारे स्टेट का बजट 2,30,000 का है। अगर ये ऐसा चलता रहेगा तो आगे भी देश बढ़ेगा, सब भी बढ़ेंगे। मगर ये जो मैं बोल रही हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो काम है, जो स्किल का हो रहा है, उड़ीसा में जो स्किल सेंटर्स है, जितने छोटे से छोटे बच्चे भी स्किल हो रहे हैं, उनके लिए ऐसा प्रावधान हो कि वो सारे जगह में जा सके, सारे जगह जाकर काम कर सके। और जब हम इकोनॉमिक के बात कर रहे हैं, 7-5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बात कर रहे हैं, तभी हम लोग कैसे करके रेलवे कनेक्टिविटी हो, नेट कनेक्टिविटी हो, बैंक कनेक्टिविटी हो। आज भी हमारे 8 जिला में रेलवे नहीं है, आज भी 74% नेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, जबकि देखा जाए तो 85% नेशनल एवरेज है। आज भी हमारे पास 4,549 गाँव में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक का कनेक्टिविटी भी नहीं है, बहुत सारे बैंक नहीं है। जब सरकार डीबीटी के बात करती है तो बैंक ना हो तो डीबीटी कैसा हो। मैं अभी बोलूँगी कि डीबीटी के बारे में जब बात करेंगे तो उड़ीसा ही पहला स्टेट है जब 2007-8 फाइनेंशियल ईयर में नरेगा प्रोजेक्ट में गंजाम जिला, मुख्यमंत्री के जिला में पहले जिलापाल VK पांडियन सर ने डीबीटी के पहले बार इंट्रोड्यूस किया था। ये है उड़ीसा जो मार्ग दिखाता है। इसके बाद में डीबीटी आया, मगर डीबीटी के लिए फिर बैंक का जरूरत होता है। मैं फिर भी बोलूँगी, आज भी सारे बैंक गाँव में बैंक के लिए माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमो बैंक की तरह एक योजना खोली है, जो बैंक हमारे हर गांव में होगा। मैं अभी भी फिर भी बोलूंगी, हमारे ममता, एक मिनट सर, मैं कंक्लूड कर, एक ममता स्कीम है हमारा, हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है? व्हाट्स द नेम? ममता। ये आपके बहुत करीब नाम है सर, मुझे पता है, थैंक यू सो मच। ये ममता योजना है जो हमारे सारे उड़ीसा के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है, जो देखा जाए तो ड्रास्टिकली मातृमूत्रहार और शिशु मूत्र MMR और IMR कमाया। मैं अभी भी बोलूँगी, फार्मर इनकम कहीं डबल हुआ ना हुआ हो, हमारे पिछले 2 साल से हमारे यहाँ का फार्मर्स का दुगनी इनकम भी हो रहा है। अगर ये सबको साथ में लेके अगर चलेंगे ना सारे स्टेट को, तो सारा दुनिया हंसेगा। ये मैं अभी भी बोलूँगी, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये हमारी हिंदुस्तान है ना, सबसे अच्छा है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सबका एक ही साथ में अगर देखा जाए तो इक्वली डेवलपमेंट हो तो कहीं ना कहीं भारत भी हंसेगा, सबको ही हंसेंगे। मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। Honorable members, some speakers are yet left. We'll take them tomorrow. I will now continue with the special mentions. Oh, please. No, sir. Actually, thank you. No. It's on this only. Nothing. One thing. It's on this. Actually, so yesterday you gave one thing. Actually, Derek, you started it so wholesomely. Thank you. That no, that is the problem. I have got requests from large number of members that don't curtail our time. We can't have it full say. I told them I have not been very fair to the first speaker. No, I have not been fair to the first speaker. I gave him only 12 minutes. If I were to increase the time, he would have got more. Okay, what have we to say? No, sir, the issue is we've had a good debate. Yesterday was 3.5 hours. Now today is 3.5 hours. So now you're saying it will continue tomorrow. For half an hour. For half an hour. Yes. So let me make my position clear. Otherwise tomorrow you will wonder why I've gone missing. Because as per the rule, the minister will reply and then that is the end of the discussion. So lest you do not misunderstand me, tomorrow is a very important day. I seek your indulgence. Our friends in the Congress party are swearing in their chief minister in Telangana. We'll be happy to be with them. So I'll be missing tomorrow. It's not any boycott. It's a celebration. That's all, sir.
we'll consider, but you know the outcome. Thank you. We'll consider Shri K.R.N. Rajesh Kumar, demand for establishment of District Central Cooperative Bank in the Namakkal district of Tamil Nadu. Is the honorable member here? Not present. Dr. Kirodi Lal Meena. Demand to declare cow as national animal to protect our culture. महोदय, गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। ये समय की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमज़ोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुतायत राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित है। सनातन धर्म में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। गाय हिंदू संस्कृति का मजबूत प्रतीक एवं आस्था का केंद्र है। इसलिए जब कोई भी गौहत्या करता है तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। गाय का मांस खाना किसी भी प्रकार से किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। लोग आर्थिक रूप से भी गाय पर निर्भर हैं। गौरक्षा किसी धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। मुस्लिम शासकों ने भी गाय को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। बाबर, हुमायूं और अकबर सहित कम से कम 5 मुस्लिम शासकों ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अतः सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। श्री A. Rahim, concern over children with type 1 diabetes. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Type 1 diabetes is a chronic autoimmune condition that affects individuals of all ages, but is particularly challenging for children and their families due to its early onset and lifelong impact. It requires continuous management, including regular blood glucose monitoring, insulin injections or pump therapy, and adherence to strict diet and exercise regimen. For children, this can significantly disrupt their daily lives, impacting their education, social interactions, and overall well-being. Access to essential medical supplies such as insulin, glucose monitoring devices, and other diabetic care essentials remains a significant concern, especially for families from economically disadvantaged backgrounds. The high cost of these supplies creates a barrier to effective management and often leads to compromised health outcomes for these children. In India, the number of children diagnosed with the type 1 diabetes is steadily rising. I have raised questions on this issue in the 260th session of the Parliament. The government doesn't have any data on children with type 1 diabetes and doesn't have any scheme for the health care of children. Addressing the needs of children with type 1 diabetes requires a multifaceted approach involving healthcare systems, education, accessibility to resource, research advancements, and public awareness. I urge the government to take proper action to ensure the well-being of children. I also urge to make insurance available to other healthcare facilities, and this matter should be taken up
by the House immediately. Thank you, sir. Thank you. Honorable Sri Samirul Islam, MP, need to address the conditions of tea plantation workers in West Bengal. Respected Sir, there are around 300 tea estates across Darjeeling, Alipurduar, Karsiong and Jalpaiguri. More than 3 lakh laborers work in nearly 400 tea gardens in North Bengal. And none of them has land rights on a estate where they have been living for generations. The union government is responsible for securing better working conditions for the workers. It has the authority to take over the management of a tea company which fails to comply with the Tea Act 1953. The West Bengal government is proactively acting against organizations who are not paying provident fund and gratuity. Under Chasundari scheme, the Bengal government is building over 4,000 homes for tea garden workers. We have already finished construction of 1,200 houses. On the other hand, the union government has failed to fulfill its promise of taking over 7 tea gardens. Only approved text. The promise was made by a union government during 2016 assembly election campaign. Tea estates in other parts of the country such as Assam need urgent attention. You have to read only approved text, nothing else than that. It will not go on record. Attention of the union government. Okay. There is no provision of ensuring of giving them their due provident fund by the union government. However, there are no scholarships and stipends promised to tea garden workers' children. There is a dire need to address the condition of tea plantation workers. I urge the government to discuss the same and work towards ensuring better conditions for tea workers to promote the industry. Thank you. Thank you, sir. Only approved text will go in the record. Mani Ajay Pratap Singh, concern over stray animals. Mani Ajay Pratap Singh. माननीय उपसभापति महोदय, आज सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है। इन आवारा पशुओं के कारण प्रतिवर्ष 1350 से 1400 व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। इनके कारण प्रत्येक गांव में सैकड़ों एकड़ ज़मीन परती रह जाती है तथा सैकड़ों एकड़ ज़मीनों पर खड़ी फसलों को ये आवारा पशु नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि पशुपालक इन पशुओं को पालने के लिए तभी तैयार होगा जब ये पशु आर्थिक रूप से उपयोगी होंगे। इसलिए इन पशुओं में नर पशुओं का व्यापक बंध्याकरण अभियान चलाया जाए जिससे इनकी वंश वृद्धि रुके तथा मादा पशुओं के मध्य व्यापक नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी चलाया जाए जिससे दुधारू नस्ल के उपयोगी पशु तैयार हो सकें जिन्हें पालने के लिए पशुपालक प्रोत्साहित हो। सरकार को बजट 2022-2023 में उल्लेखित गोवर्धन संयंत्रों को शीघ्र स्थापित करना चाहिए जिससे पशुपालकों को गोबर गोमूत्र का भी मूल्य प्राप्त हो सके। सरकार पशु संरक्षण अधिनियम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश संबंधित पक्षों को दे जिससे जिस व्यक्ति के पशु आवारा घूमें, फसलों का नुकसान करें अथवा किसी के जान माल का नुकसान करें, उस पशुपालक को कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। प्रत्येक पशु का ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन तथा बीमाकरण अनिवार्य किया जाए जिससे कि पशु संरक्षण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद माननीय अजय जी। ऑनरेबल श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड फॉर इंक्लूडिंग प्राइम टूरिस्ट साइट्स ऑफ उड़ीसा into iconic sites list. Sir, thank you, sir. Sir, my special mention is to request and urge the government to include prime tourist sites of Odisha into the iconic sites list. Sir, in the year 2019-20 budget speech, the Honorable Finance Minister declared 17 tourist sites as iconic sites, intended for development into world-class destinations to set an example for other sites.
The list didn't include any site from the state of Odisha, despite the state's robust tourism infrastructure, cultural richness, natural beauty, and great historical significance. Sir, Odisha alone had a total tourist footfall of 1 crore 31 lakhs in the year 2016-17, majorly to the five prime tourist sites, namely Konark Sun Temple, Chilika Lake, Bhitarkanika National Park, Simlipal National Park, and the Diamond Triangle Buddhist Circuit. Since then, the state has maintained a growth rate of 8% every year except 2021 due to the pandemic. The continuous efforts and initiatives of the state government in organizing events like the World Tourism Day 2020, Konark Festival 2020, Mukteswar Dance Festival 2021, and the Men's Hockey World Cup in partnership with the International Hockey Federation twice in a row, sir, in 2018 and 2022, have led to 110% growth of tourism in Odisha post-pandemic. Furthermore, tourist sites like the Konark Sun Temple, which is a UNESCO World Heritage Site, stands out among the 10 most popular centrally protected monuments in India according to the Tourism Ministry data. Sir, thus I would request the Government of India to formally include at least 2 of the 5 prime tourist sites of Odisha in the list of iconic sites, which has also been a long pending request by the state government since the year 2019. Dhanyavad, Sujit. Honorable Sri Vinay Vishwamji, need for adequate social trains in festive season to Kerala. Thank you, sir. Sir, the Indian Railways is the lifeline of India. In light of the exorbitant prices charged by the airlines during the festive seasons, the railway play a pivotal role in helping ordinary citizens travel to their homes. During the recent Diwali season, it was recently reported that thousands of people were waitlisted and could not get trains back home. The hardships caused by such waitlisting is significant as people eagerly waiting to join their families to celebrate festivals were denied the opportunity. It has also come to notice that this helpless plight had led several passengers to enter trains without confirmed tickets, causing overcrowding of trains. It is observed that due to overcrowding, people travel risking their lives at times of festivals. Every year, thousands of Malayalis travel back to Kerala during the festival seasons of Onam, Christmas, Eid and New Year. Now comes Christmas and New Year. Many of them are disappointed due to the lack of trains and tickets and have to suffer. In this context, I urge the Honorable Railway Minister to ensure adequate special trains to Kerala to meet the demands of the festive season. Thank you. Thank you, Honorable Vishwamji. Manni Sri Sant Balveer Singh Ji. विषय concern over exploitation of the women of the country, especially the women of Punjab in the Gulf. बहुत धन्यवाद सत्कारयोग उप चेयरमैन साहब ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ट्रैवल एजेंट गरीब घरां दीयां औरतां लड़कियां नूं फसा रहे हैं जो बहुत छोटियां हैं, उन्होंने वेटर वीजे ते खाड़ी देशों में वेच रहे हैं जिथे उन्हों का शोषण किया जा रहा। उन्होंने घरां जां रेस्टोरेंटां विच काम करन दा झांसा दे के दिता जाता है कि 35 तो 40 हज़ार तक तनख्वाह का झूठा भरोसा दिता जाता है। तो फिर उत्थे इन्हां औरतां नूं अरबी भाषा विच लिखे एक समझौते ते दस्तखत करन लई कहा जाता है, जिसका वो नजायज़ फायदा उठा रहे हैं। ये कारकुनां दा एक वड्डा समूह है जिसका नैटवर्क देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों विच
फैलिया होया है। वापस आईਆਂ लड़कियां ने दस्सिया है कि उन्हां विच नेपाल दीयां औरतां भी हन, जिस तो साबित होंदा कि ये ग्रोह अंतरराष्ट्रीय है। हैरानी की गल यह है कि इन्हां औरतां नूं इराक विच भी भेजिया जा रहा है, जिथे जाना बहुत मुश्किल है। असीं खाड़ी देशां विच भारतीय दूतावासां दा धन्नवाद करते हैं, जिन्हां ने अपने देश के दुखी नागरिकों को कढ़ण विच मदद की है। चेयरमैन साहब, तुहाडे राहीं असीं विदेश मंत्रालय नूं बेनती करते हैं कि इस गोरख धंधे विच नाल जुड़े हुए लोगों दीयां गतिविधियां ते नज़र रखी जाए और देश दीयां औरतां ते लड़कियां नूं विदेशों विच बेचण वाले ट्रैवल एजेंटां ते सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू, धन्यवाद चेयरमैन साहब। धन्यवाद। Honorable Sri M. Muhammad Abdullah request to give preference to the online railway ticket holders for the parcel service as well. Honorable Deputy Chairman, sir, thanks for the opportunity given me to speak on this special mention. Sir, the world's fourth largest Indian railways, which operate with more than 80% of passengers reserving online, is facing major problems in freight services. The reason is the meager availability of parcel service at intermediary stations. The parcel box at each train is filled from the source station, and the majority of the parcels loaded are to the destination station of the train. The passengers from intermediary stations are suffering a lot due to these preferential parcel services, and their parcels booked online are kept waiting at the intermediary station of the train, which is the source station of the passenger, for more than a week or some months. For example, if the person is traveling to a different location due to some necessity, and if he is sending his bike via railway parcel service, the bike must wait at the booking station for more than a week or months, and it might get damaged or rusted. The material loss is completely attributed to the poor passenger. Sir, it is even more pathetic if the passenger's source station and the destination station are intermediaries to the train. Sir, railways are still a preferential mode of transport for many of the passengers in India because of their affordability. Hence, I humbly request the Honorable Railway Minister via this August House to take necessary steps to work on the possible way to track and send the parcel based on parcel booking date on priority basis, so that no parcels should wait longer at the railway stations. Thank you, sir. Thank you, Mohammad Abdullah ji. Manye Sri Kailash Soni ji, concern over rising cases of destruction by wild boar. माननीय उपसभापति जी, मान्यवर, देश भर में जंगली सूअरों के कारण ग्रामीण जनजीवन को संकट उपस्थित हो गया है। जंगलों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके कारण आतंक मचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भय व्याप्त है। आए दिन कृषकों के ऊपर इनके द्वारा हमले किए जाते हैं, जिससे अनेकों कृषकों की जानें जा चुकी हैं। अनेकों ग्रामीण जन घायल हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा कृषि उपज को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में गन्ना की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे। इसके लिए भारत सरकार से मांग है, सूअरों को मारने का कानून शीघ्र बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जंगली सूअरों से फसल एवं जनजीवन की सुरक्षा के लिए कृषकों को बाड़ लगाने, बिजली के तार जो मानव जीवन के लिए नुकसान रहित हों की व्यवस्था के लिए कानून बनाने व अनुदान का प्रावधान किए जाने की जनहित एवं खेती की सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। मेरी भारत सरकार से अपेक्षा है कि देश में जितने भी बंदूक लाइसेंसधारी हैं, उन्हें कृषि के समय, विशेषकर मध्य प्रदेश में गन्ना के सीजन के निश्चित अवधि के लिए इन्हें मारने की अनुमति देने के लिए जिला कलेक्टरों एवं अनुविभागीय स्तर के अधिकारियों को अनुमति देने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद माननीय सोनी जी। माननीय नीरज डांगी जी, डिमांड फॉर ए पॉलिसी फॉर फिलिंग अप सीट इन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा 8 विभिन्न विशेषताओं में राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिए कुल 496 पोस्ट MBBS डिप्लोमा सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। NBE के पत्र दिनांक 2/6/2022 के अनुसार इसमें से 50% तक सीटें सेवारत डॉक्टर से भरे जाने का प्रावधान है। यह भी उल्लिखित है कि काउंसलिंग के उपरांत सेवारत डॉक्टर्स की रिक्त रही सीटों को भी राज्य गैर सेवारत चिकित्सकों से नहीं भर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पोस्ट MBBS डिप्लोमा के प्रवेश के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल्स काउंसलिंग संपन्न हुई है, जिसमें सेवारत चिकित्सकों के लिए आरक्षित 248 सीटों में से राजस्थान में 90 सीट्स रिक्त रही हैं। इसमें राज्य का सही उपयोग नहीं हो सका है, जिसे रोका जाना चाहिए। राज्य सरकार इन रिक्त रही सीटों को राज्य के निवासियों से भरना चाहती है, जो कि कोर्स पूर्ण होने पर राज्य को सेवाएं दे सकें। केंद्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से भरी गई 248 सीटों में से मात्र 13 अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के चयनित हुए हैं, शेष सभी राज्य से बाहर के अभ्यर्थी हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार इसे उचित नहीं मानती है कि स्टेट काउंसलिंग के लिए सीटों की संख्या कम कर केंद्रीय कोटे को अधिक सीटें आवंटित की जाएं। इसलिए यह अनुरोध है कि वर्तमान नीति में सेवारत चिकित्सकों की सीटों की संख्या के प्रावधानों की पुनः समीक्षा की जाए तथा PG सीट्स की प्रक्रिया अनुसार यह राज्य पर छोड़ा जाए कि यह पोस्ट MBBS डिप्लोमा सीटों को स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से भर लेवें। साथ ही NBE राज्य सरकार को यह अनुमति भी देवे कि वे स्टेट कोटे की सेवारत चिकित्सकों की रिक्त सीटों को गैर सेवारत चिकित्सकों से द्वितीय चरण की काउंसलिंग के दौरान भर लेवें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अनिल सुखदेव राय बोंडे, डिमांड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेशल मेंशन रख रहा हूँ। उद्योग जगत में मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लगाकर उद्योग को प्रोत्साहित किया है। मैं मोदी सरकार का इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। वैसे ही खेती एक ऐसा उद्योग है जिसे देश की भूख मिटाई जाती है, मानवीय भरण पोषण होता है तथा देश के सकल घरेलू उत्पादन में भी खेती तथा खेती संलग्न व्यवसाय का योगदान है। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि किसान को ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उसके भाव कम हो जाते हैं। यह बात प्याज, टमाटर, सब्जियों, अनाज, कपास, अन्य के बारे में देखा गया है। किसान मेहनत करके अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाता है, उसके लिए मजदूरी, तकनीकी, खादों आदि का इस्तेमाल में पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के बाद में उसका फ़ायदा उसे नहीं मिल पाता है। किसान जितना उत्पादन बढ़ाता है उतना उसे प्रोत्साहित करना जरूरी है। कुछ राज्य में धान उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस के रूप में MSP से ज़्यादा रकम दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकार ने भाव कम होने पर प्याज के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल, धान के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टर का प्रोत्साहन दिया था। इसी उपलक्ष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSP से ज़्यादा प्रोत्साहन अनुदान देने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में कृषि तथा कृषि संलग्न उत्पादनों के लिए उत्पादन बढ़ाओ और प्रोत्साहन राशि पाओ, ऐसी योजना पर सरकार विचार करे। श्री संतोष कुमार P, डिमांड फॉर इंक्लूडिंग the unorganized workers under ESIC coverage. Thank you, Chairman, sir. Demand for including the unorganized workers under ESIC coverage. The workers in the unorganized sector constitute about 93% of the total workforce in the country. The term unorganized worker has been defined under the Unorganized Workers Social Security Act 2008 as a home-based worker, self-employed worker, or a wage worker in the unorganized sector, and includes a worker in the organized sector who is not covered by any of the existing acts. As per the Economic Survey 2021-22, total number of people working in the unorganized sector is around 43.99 crores during 2019-20. Although they constitute the majority of our workforce, they are still out of the purview of all social security benefits. The ESIC applies to all factories and other establishments employing 10 or more persons
earning up to rupees 21,000 a month. The ESI Act of 1948 does not apply to the unorganized sector now. International commitments and constitutional obligations bind the government to provide social security benefits to all citizens within the context of raising medical costs. The lack of social security benefits forces the workers to fall into the debt trap and poverty cycle. Unorganized workers are compelled to spend out of the meager income for all contingencies and remain helpless in their old age. We must now view ill health or malnutrition as a contingency, but as a continuing certainty of life for which protection must be arranged. Therefore, there is an urgent need to extend the ESIC coverage to our unorganized sector workers, as they are the poorest of the poor in the country. I urge the government to take necessary steps in this matter. Thank you, sir. Srimati Kanta Kardam, demand for opening of an additional Kendriya Vidyalaya in Hapur, Uttar Pradesh. धन्यवाद सर। मैं आज इस सम्मिलित सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं को संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षण करना चाहती हूँ। जनसंख्या और शिक्षक आकांक्षाओं को वृद्धि करने वाली जिला हापुड़ को एक अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय की सख्त ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में हापुड़ में पर्याप्त जनसंख्याओं को वृद्धि देखी गई है और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना न केवल प्रचलित शिक्षकों की मांगों को संबंधित करेगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। वर्तमान में बाबूगढ़ में केंद्र क्षेत्र में केवल एक ही केंद्रीय विद्यालय है जो हापुड़ की बढ़ती शिक्षक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय विद्यालय मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे दूर दराज के स्थानों में स्थित हैं, जिससे उन छात्रों के लिए असुविधा होती है जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तथा पहुंच की गारंटी होगी, नामांकन दर में वृद्धि होगी, विद्युत पृष्ठभूमि के क्षेत्रों की छात्राओं की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा और बुनियादी ढांचे तक पहुंचेगा प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा यह शिक्षक और गैर शिक्षण दोनों क्षमताओं में स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार दिलाएगा। हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देने में शिक्षक के बढ़ते महत्वपूर्ण को बचाते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी हापुड़ में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए उपाय करने का अनुरोध करूंगी। इस तरह की पहले भी शिक्षक संस्थानों में पढ़ने के लिए योगदान देगी और राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा। धन्यवाद सर। श्रीमती सीमा द्विवेदी, डिमांड टू एस्टेब्लिश ब्लड बैंक एट ब्लॉक लेवल। मैं धन्यवाद देना